Hello and good evening, and welcome to this session of macroeconomics now. We've already done micro, we'll now start with macroeconomics. Very good evening to all of you. Always, a good experience to read your chat. I just read a message. I just read a message कि सर आज ग्राफ सही से समझाना. मे बी अगर आपको समझ नहीं आया अभी तक और बाकी सबको आ गया है, मे बी योर इंटेलेक्ट इज नॉट सही, तो आप उसको ठीक कर लो तो आपको समझ आ जाएगा. It's depends on a lot of things. Hope you can all see and hear me. If you can see and hear me, please एक बार yes लिख दो chat में. If you can see and hear me, please write yes in the chat. ठीक है. If everybody is writing yes, that means the problem, if there is somebody has a problem, this problem is on your end. तो या तो आप अपना you can refresh what you are seeing, or you can just press the back button. It generally gets resolved. Everybody else is saying yes. Okay. So far in our understanding of economics, we have done about 15 lectures, and in 15 lectures we have understood. So far we've understood poverty, we've understood inequality, we've understood unemployment, we've understood microeconomics. Right? These are all the things that we have already understood. Now, whatever we have learned in microeconomics, these concepts we will now apply and understand the idea of macroeconomics. So we'll start today from macroeconomics. देखो, अगर आपको माइक्रोइकोनॉमिक्स में एक आधा ग्राफ नहीं समझ आया या कोई दिक्कत हुई, it really does not matter. Now, if you don't understand graphs in macroeconomics, it will matter a lot, right? Because the entire foundation of what we have to study in the next few subjects, जैसे अब macroeconomics करेंगे, I'll just tell you what we'll go with. Once we've done macroeconomics, then we'll go and understand GDP. तो अगले कुछ दिनों में we are going to understand macroeconomics and GDP. Then we are going to move on to inflation. After we understand inflation, we are going to understand money. After we've understood money, we'll try and understand banking. From here, we will go on to capital markets. And after we have studied capital markets, we will go on to international economics. This is where our core economics will finish. Iske baad, we have a few other things. We have the idea of agriculture. We have to study investment models, we have to study infrastructure, and we have to study a little bit of detail about services and industry, which basically have to study the sectors of the economy where agriculture is the most important, and we have to study infrastructure and investment. Iske baad. So these are the most important topics that we have to do now, right? Now all of these topics, ये जो topics हैं, यहाँ से majorly means में questions आते हैं. These are the topics where you will majorly see, actually including GDP. These are majorly the topics where you will see the questions in both prelims and means. And to understand all of these topics, whatever graphs we are going to make in macroeconomics are important. So जो graphs मैं आज आपके साथ बनाऊंगा या whatever we understand in the next 2 days is probably going to be relevant for all of these topics, right? So please keep that in mind. अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है. Let's just take a small recap and understand what we were studying in microeconomics. In microeconomics, we were looking at the economy through a microscope. So at a personal level, we were looking at the economy at a personal level. And just one second, guys, sorry. Yeah, we were looking at the economy at a personal level. At a personal level, when we looked at the economy, we understood that there are two things. There is a demand curve and there is a supply curve. So there is a demand curve and there is a supply curve, right? Then if you look at the intersection of this demand and supply curve, you will reach an equilibrium price and you will reach a equilibrium quantity. Okay, this is the idea. If this is
the price quantity graph that we've studied, we were in microeconomics looking at individuals. मतलब मैं और आप individual level पे हमारी बात हो रही थी. Now let's go forward and understand कि अच्छा यार, let's say it is the overall level. अगर हम microscope से we try to move on and try to look at the economy through a telescope, and we'll try to look at macroeconomics. I would want to now look at the economy through a telescope. मतलब ओवरऑल लेवल पे मुझे इकोनॉमी को देखना है, पूरे बड़े लेवल पे इंडियन इकोनॉमी को देखना है. आई एम नॉट लुकिंग एट one transaction, I am not looking at one particular instance of somebody buying something. I am looking at all the demand in the economy, the complete demand in the economy. I'm looking at the complete supply in the economy, the complete output of the economy, the complete price level of the economy. We are going to now look at the same things here, but understand that the principles will not change. Whatever principles existed before, वही principles आज भी exist करेंगे. They are not going to change because economy में, हमारी जो पूरी इंडियन इकोनॉमी में अगर मैं बात करूं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मैं उन सबको सम करके एक बारी में देखना चाह रहा हूं. आई वांट टू लुक एट ऑल द ट्रांजैक्शंस एट वंस. बट अगर मैं ग्रैन्युलर लेवल पे देखूं, लेट्स से आई एम सेइंग दैट आई वांट टू लुक एट दिस एंटायर सर्कल एट वंस, बट इफ आई जूम इन right, and this circle has a lot of dots, let's say this circle is like this, right? So I say that I want to look at this entire circle all at once. This big circle or this entire circle, this entire idea represents the macroeconomic picture. So I want to look at this entire idea all at once. मैं इस पूरे आइडिया को एक बारी में देखना चाहता हूं, right? But if I zoom in, I see that यार इसमें तो it is actually made up of these small transactions only. It's not like ये कुछ अलग है. So it's made up of those same small transactions. तो principles change नहीं होंगे, बस at the macro level maybe the language will change a little bit, maybe this graph will change a little bit, but the principles will not change. ठीक है. अब macroeconomics looks at the overall economic activity in the country. So here we are trying to understand the overall economic activity in the country. Like we understood, there are two children of the economy. There are consumers who look at utility. ये चीज हम समझ सकें that there are consumers who are trying to maximize utility and there are producers who are trying to maximize profits. Right? Government, we understood, was the parent of the economy and the government had four macroeconomic objectives. One is economic growth. Two is low but not zero level of unemployment. Third is low and stable rate of inflation, and fourth is equitable distribution of income. अब हमने ये भी देखा कि इन चार ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए government has two tools. One is monetary policy. Monetary policy is the tool through which government can use interest rates and money supply. Fiscal policy is the other tool where government can use taxation and spending. इन दोनों टूल्स को यूज करके गवर्नमेंट को ये चार ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने हैं. यही पूरी इकोनॉमी की कहानी है. Now, अब this is something important. मैंने आपको क्या बोला यहां पर, that the principles that will apply will be the same. जो प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो सेम है, बट सम ऑफ द लैंग्वेज विल चेंज. राइट. अब इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं. इन माइक्रो इकोनॉमिक्स आई वाज लुकिंग एट डिमांड ऑफ इंडिविजुअल्स. मैं डिमांड देख रहा था और इंडिविजुअल्स की डिमांड देख रहा था, एक एक पर्सन की डिमांड देख रहा था. एट द मैक्रो स्केल व्हाट विल आई लुक एट? मैक्रो, अब मुझे इंडिया के स्केल पे देखना है, तो मैक्रो स्केल पे अब मैं क्या देखूंगा? व्हाट विल आई लुक एट द मैक्रो स्केल? डिमांड के सामने क्या आएगा? I will want to look at the total demand of the country. है ना? डिमांड है, डिमांड के सामने पहले मैं इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड देख रहा था या इंडिविजुअल आइटम्स की डिमांड देख रहा था. लेट्स से आई वाज लुकिंग एट द मार्केट फॉर आईफोन्स.
मैं आईफोन्स की मार्केट देख रहा था and I was looking at, okay, this is the demand for iPhones, this is the supply for iPhones, right? अब मैं देखूंगा डिमांड फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, टोटल डिमांड. पहले मैं देख रहा था सप्लाई में एक पर्टिकुलर आइटम की देख रहा था, सप्लाई ऑफ आईफोन्स. नाउ आई विल वांट टू लुक एट टोटल सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स. सारी डिमांड की समरी कर लेते हैं, सारी सप्लाई की समरी कर लेते हैं, टोटल सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स. ठीक है, अब पहले मैं देख रहा था मार्केट. I was looking at the market for iPhones. So I was just looking at one product. Market for iPhones is what I was considering. What am I considering now? अब इसके सामने यहां पे क्या होना चाहिए? What should come here? In front of market क्या आना चाहिए? सिंपल भाषा में बताओ. The entire economy of the country. पहले I was looking at the market only. पहले मैं सिर्फ एक market for iPhone या market किसी एक चीज की market देखना चाह रहा था. Now what am I trying to look at? I am trying to look at the entire economy. So I should say now national economy, right? अच्छा. Earlier in microeconomics, I was looking at quantity. दो चीजें देख रहा था ना, quantity and price. I was looking at quantity, I was looking at price. ये देख रहा था market for iPhones. I was trying to look at the quantity of iPhones and I was trying to look at the price of iPhones. अगर एक मार्केट में कंसीडर करूं, अब मैं पूरी इकोनॉमी को देख रहा हूं, the entire economy. So quantity here will represent the complete output of the country or not? पूरी कंट्री का आउटपुट. पहले मैं देख रहा था कि यार अच्छा ये मार्केट फॉर आईफोन्स है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये प्राइस ऑफ आईफोन्स रहता है और ये क्वांटिटी है. तो इतने आईफोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. पहले मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईफोन की बात कर रहा था. नाउ आई एम गोइंग टू लुक एट ऑल द प्रोडक्ट्स. आई एम लुकिंग एट टोटल डिमांड, आई एम लुकिंग एट टोटल सप्लाई. So I can say that I'm looking at total output of the economy, complete output of the economy. This total output of the economy is nothing but GDP. आएंगे हम GDP के estimation पे. अभी के लिए you can know this is GDP. तो यहां पर जो quantity लिखता था मैं पहले ग्राफ में, now I'm looking at the whole economy. पूरी economy की quantity produced, पूरी economy की quantity produced is output, which is nothing but GDP. GDP क्या होता है उसमें आएंगे. अभी you can just think of output. अब पहले मैं देखता था प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ये मार्केट फॉर आईफोन्स है. सो आई वाज लुकिंग एट अ पर्टिकुलर प्राइस कि अच्छा यार आईफोन्स का प्राइस कितना चल रहा है बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, पर्टिकुलर प्रोडक्ट. I was looking at the price of a particular product कि अच्छा यार there is one product which is iPhone. इस iPhone का पर्टिकुलर iPhone का प्राइस कितना चल रहा है. Now I have to look at the entire economy. When I have to look at the entire economy, जब मैं पूरी इकोनॉमी देख रहा हूं, I have to look at prices of all the products. जितने भी इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबका एक प्राइस मुझे को देखना है. I can't add all of them. ऐड तो नहीं कर सकते. तो मैं क्या देखता हूं, I look at price level. कि जनरल इकोनॉमी में प्राइस लेवल किस लेवल का है, कि चीजें महंगी हैं या सस्ती हैं. आईफोन का आप बात कर सकते हो, आईफोन कितने रुपए का मिल रहा है. जब आप इकोनॉमी लेवल पे बात करोगे तो आप बात करोगे महंगाई है या नहीं है, महंगी चीजें हैं या सस्ती चीजें हैं, बिकॉज यू आर लुकिंग एट एन ओवरऑल पिक्चर. सो नाउ डिमांड बिकम्स टोटल डिमांड एंड सप्लाई बिकम्स टोटल सप्लाई. इन इकोनॉमिक्स द वर्ड फॉर टोटल, ये जो वर्ड है टोटल, इन इकोनॉमिक्स इट इज रिटन एज aggregate. So there is aggregate demand or aggregate supply. So aggregate, total here is aggregate. Okay, total demand, total supply, aggregate demand, aggregate supply. Right? Market becomes national economy. Quantity becomes output. कि एक किसी चीज की नहीं, overall output I'm looking at. And price becomes price level. कि चीजें महंगी हैं या सस्ती हैं.
Based on this understanding, if I was to draw a graph of microeconomics, अगर मैं microeconomics का कोई graph draw करता, तो I would write this as price, this as quantity, this as demand, this as supply, and I would mark this as P equilibrium and this as Q equilibrium. This was the microeconomics graph. If now I have to make a macroeconomic graph, अगर मुझे अब macroeconomics का ग्राफ बनाना है, तो I will now replace the same things, but the principles are the same. Only the notations will change. So first I will make this curve. I will call this aggregate demand. Then I'll make this, I'll call this aggregate supply. Okay. Then I will go at this point and I will call this price level of the economy. Price will become price level. Okay, this is the price level of the economy. Economy is level pe hai. I will go here and I will call this the entire output of the economy, or I can also call this the GDP. I can call it GDP of the economy, right? So the principles have not changed. Only demand has become aggregate demand, supply has become aggregate supply, price has become price level, and quantity has become output. Now this was, let's say, for a particular product. This can be market of iPhones. This is macroeconomic understanding of India. पूरे इंडिया में सारी डिमांड, सारी सप्लाई, प्राइसेस किस लेवल पे है इंडिया में, और इंडिया में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है. आर यू एबल टू नाउ रिलेट and transfer your knowledge from this stage to this stage? हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स इतना डिटेल में पढ़ा ही इसलिए है ताकि हम मैक्रो में टाइम वेस्ट ना करें ग्राफ में, ताकि हमें ऑलरेडी वो अंडरस्टैंडिंग हो. ठीक है, वी आर जस्ट टेकिंग दिस कॉन्सेप्ट एंड प्लेसिंग इट हियर. दैट्स ऑल वी आर डूइंग. ठीक है. So if I look at the macroeconomic language, market means national economy, demand is aggregate demand, supply is aggregate supply, price becomes average price level, quantity becomes national output, which is nothing but GDP. ये हम समझेंगे GDP की definition में तो हमें समझ आ जाएगा. अब these words I want you to know. These words, when we study further, you will understand these words also. But I want you to know these words at the microeconomic level. Microeconomic level पे आप कहते हो decrease in demand, है ना. आपने कहा था कि अच्छा यार ये demand curve है, ये supply curve है, कभी कभी demand curve अंदर shift हो जाता है, decrease in demand happens, है ना. ये आप micro level पे कहते हो. Macro level पे क्या होगा? अब देखो, आपको ये सोचना जरूरी है, तभी आप ये वर्ड्स का मीनिंग समझ पाओगे. माइक्रो लेवल पे कह रहे हो मैं चीजें कम खरीद रहा हूं, शिविन इज बाइंग लेस थिंग्स, शिविन्स डिमांड हैज डिक्रीज्ड, ये आप कह सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे. अगर इसको मैं मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे देखूं, पूरे इंडिया में ही चीजें लोग कम खरीद रहे हैं. पीपल आर बाइंग लेस प्रोडक्ट्स एट द कंट्री लेवल. दिस इज डिक्रीज इन डिमांड एट द कंट्री लेवल, नोन एज recession. This is what recession is, and when we study GDP, you'll understand this. Increase in demand. मैं कोई चीजें ज्यादा खरीद रहा हूं. At the macroeconomic level, increase in demand is not called inflation. Increase in demand leads to inflation. ये हम प्रूव करो. I'll prove all four of these to you today only. I'll prove all four of these. अभी बस देख लो. I'll prove all four of these to you on a graph. माइक्रो लेवल पे डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कम हो गई. एट द मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, यहां मैं कह सकता हूं कि एक चीज की, चलो ये पेन पहले ज्यादा मिल रहे थे, अब कम मिल रहे हैं, पेन की सप्लाई कम हो गई. एट द मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, आई वुड से सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स इन द इकोनॉमी हैज रिड्यूस्ड. देयर इज सम शॉक फैक्टर. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड. इंक्रीज इन सप्लाई,
एक फैक्ट्री ये पेन बनाती थी 10, अब ये 12 बना रही है, तो 20% इंक्रीज इन सप्लाई इन वन फैक्ट्री. दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक स्टेटमेंट. नाउ आई से एट द कंट्री लेवल, पूरी कंट्री पे सब लोग ही ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं. व्हाट हैज हैपेंड? ग्रोथ हैज हैपेंड इन द इकोनॉमी. इट लीड्स टू ग्रोथ. So these four terms, just see right now, when we look at the macroeconomic graph, it will be clear. Up. We now have to understand the first and the most important concept in macroeconomics, which is the circular flow of income model. Okay. See, in any economy, how do things work? अब हम आज से from today till the end of this course or till the end of this module, till the end of economics, we will now not consider things at a microeconomic level. ठीक है, अब हम सारी discussion economy level पे करेंगे. In inflation also, in money, in our discussion of banking, in our discussion of, let's say, international economics, all our discussions from this point forward will happen at the economy level. ठीक है, हमें अब इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कशन नहीं करनी है. Poverty had some discussions on the individual level. Even unemployment had some discussions on the individual level. Now we do not have to discuss any topic on the individual level. We will discuss on the economy level. Okay. So understand how does, sorry, just 1 second guys, sorry. Please understand how does any economy work. किसी भी economy में, if you know any economy has to work, how does it work? समझते हैं. देखो, इन एनी इकोनॉमी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. इन एनी इकोनॉमी, अगर मान लो हम किसी आइलैंड की बात करें, इफ वी स्पीक ऑफ एन आइलैंड जहां पर कोई बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं है, राइट, इफ देयर इज नो सच इन्फ्लुएंस, in any economy there are two things. There are going to be some firms and some companies, and there are going to be households. Households basically mean people. Households basically mean people. मेरा एग्जांपल लेके एक्चुअली समझ लेते हैं, तो this will become very clear. This is the two most basic things in an economy: firms and households, right? Firms here means companies. Firms means companies, and household means people. Household does not mean any particular, just the house. It means the people who are living in these households. वो households represent करते हैं. मेरा example ले लेते हैं. The firm at which I work is known as Sarrthi IAS. Let's understand what Sarrthi IAS is doing. Sarrthi IAS has taken from some person. Sarrthi IAS must have taken land from some person. This is actually me. Sarrthi IAS has taken labor. Sarrthi IAS takes my labor for its production. From some person, Sarrthi IAS must have taken capital, and from some person, Sarrthi IAS has taken entrepreneurship. Sarrthi IAS has taken all these four things from some people only. किसी पर्सन ने ही सारथी आईएएस को लैंड दिया होगा, किसी पर्सन ने, जैसे मैं सारथी आईएएस को अपना लेबर दे रहा हूँ, वरुण सर इज गिविंग हिज एंटरप्रेन्योरशिप, सम पर्सन मस्ट हैव आल्सो गिवन कैपिटल टू सारथी आईएएस टू स्टार्ट इट्स प्रोडक्शन. मेरी बात करते हैं. आई हैव गिवन लेबर, I have given labor to Sarrthi IAS, right? In return for this labor, what will Sarrthi IAS give back to me? In return for this labor, what will I get from Sarrthi IAS? What will I get in return for this labor? Of course, I will get my wages. See, you can't write money. You can't write money. This is what I told you in the first class. Using economic language. किसी एक बंदे ने money लिखा था, money नहीं लिखोगे. You will write wages. So I get wages. Okay? Because I am giving labor. Sarrthi IAS must also be giving rent to somebody, must be giving interest to somebody, must be giving profit to somebody. ठीक है? ये भी हो रहा होगा. ओके. अब
आई हैव ना, मेरी बात कर रहे हैं बस, मैंने अपना लेबर सारथी आईएएस को दिया एंड आई गॉट सम वेजेस. लेट्स से माय वेजेस फॉर टुडे वर ₹100. I got 100 rupees from Sarrthi IAS. ठीक है, I gave my labor, I did my job, and I got 100 rupees for the day. Now I go and I want to spend these 100 rupees at McDonald's. I do some expenditure and I spend these 100 rupees at another firm known as McDonald's. What will McDonald's give to me in return? McDonald's will give to me in return some goods and services. Maybe they will get me the good, which is a burger, and the service of delivery. Right? So goods and services in return. In the economy, this is the entire activity that is happening. आप अपना एग्जाम्पल ले लो, किसी भी हाउस होल्ड का एग्जाम्पल ले लो, कहीं का भी एग्जाम्पल ले लो, दिस इज द एंटायर एक्टिविटी दैट इज हैपनिंग. राइट? अगर हम ये वाला मॉडल देखें तो हियर व्हाट इज द मनी दैट इज सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी. अब आप फर्म्स को और हाउस होल्ड्स को, एग्जाम्पल्स को हटा देते हैं. लेट्स जस्ट लुक व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी. इस इकोनॉमी में आपने एग्जांपल्स देख लिए. मैंने 2 फर्म्स का एग्जांपल लिया था, हाउस होल्ड में मैं खुद का एग्जांपल ले रहा हूं. लेट्स नाउ ट्राई टू सी व्हाट हैज हैपेंड. Firms paid ₹100 to me. I spent ₹100 with firms. Firms paid ₹100 to me. I spent ₹100. Can you see that in this economy, there is a circular flow of income. There is a circular flow of money. किसी फर्म ने मुझे पैसे दिए, मैंने इस पैसों को खर्च किया, फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज लिए. I spent these 100 rupees, got goods and services. Next day again I went to Sarrthi IAS, earned ₹100, spent it on food. Again ये चलता रहा. This is the most simple form of an economy called two-factor economy. यहाँ पे 2 ही चीजें हैं, हाउस होल्ड हैं और फर्म्स हैं, तीसरी कोई चीज नहीं है. But money is flowing in a circular manner. How is money flowing in this particular economy? Money is flowing like this, that I first go to work and I give my labor. Firm gives me ₹100. Then I spend this ₹100 on something, and firms give me goods and services. This is exactly what is happening. So this is step 1, then step 2, then step 3, then step 4. यही हो रहा है. This is exactly what is happening. ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्लियर है. अभी देयर आर मेनी अदर थिंग्स इन दिस सर्कुलर फ्लो. At this stage, what is the money circulating in this economy? कितना मनी सर्कुलेट कर रहा है इस इकोनॉमी में at this stage? How much money is circulating? अगर समझ आ गया तो बताओ. How much money is circulating in this economy at this stage? At this stage. अच्छा, ये मनी सर्कुलेशन कहां से काउंट किया आपने? Where did you count this money circulation from? You could either count, अगर आप देखो यहां पे आप 3 चीजें काउंट कर सकते थे. या तो नंबर 1, you can count the wages I am receiving. The wages I am receiving is ₹100. That is one way to count. You can count these wages. Or you can count the expenditure that I am doing. मैं खर्चा भी कर रहा हूं रोज ₹100 का. That is one way. So one way is you can count my wages. 3 तरीके थे इस 100 रुपीज तक पहुंचने के. So to reach ₹100, जो आपका आंसर एकदम सही है, one way is you can count my wages.
Second way is you can count the expenditure that I am making. ये जो खर्चा मैं कर रहा हूं, I am spending ₹100 every day. So you can count my expenditure. Sorry. You can count my expenses or expenditure. Or the third way is you can count this, the value of goods and services that I am receiving. I am receiving, or I am rather purchasing goods and services worth ₹100 every day. McDonald's का burger, which is the good, and the service of delivery, ये मैं receive कर रहा हूं. So you can calculate the value of goods and services produced. So you can either calculate my wages or calculate my expenses, or you can calculate the value of goods and services produced in this economy. तीनों से अगर आप कैलकुलेट करोगे, आंसर विल बी 100, बिकॉज यहां पे मैंने अपना लेबर दिया, मुझे ₹100 मिले, यहां मैंने ₹100 स्पेंड किया और मुझे ₹100 के गुड्स और सर्विसेज मिले. These are the three ways. Later on, you will understand that these are the three methods of calculating GDP. There are three methods of calculating GDP. आगे भी ये बात समझ आएगी, बट मैं यहीं पे थोड़ा क्लियर कर देता हूं. There are three ways of counting GDP. If you decide to count number 1, this is called the income method. If you decide to count number 2, which is the blue arrow, this is expenditure method. And if you decide to count number 3, which is goods and services, which is the orange arrow, this is production method. इन तीन तरीके से GDP measure की जाती है. The GDP of the country in front of you right now, जो आपके सामने है, इसकी GDP अभी कितनी है? ₹100, because ₹100 is the money circulating in this economy. ठीक है? अब what is happening here? अगर मैं यहां देखूं, here households are supplying factors of production. Household yellow arrow देखो, households यानी कि मैं, मेरा एग्जांपल था यहाँ पे, households are supplying factors of production and in return they are getting wages, interest, profit and rent. Wages for labor, interest for capital, rent for land and profit for entrepreneurship, right? So I can call this the place where factors are being exchanged. Factors of production are being exchanged, or I can call it the factor market. Factors of production are being exchanged here. Houses are giving land, labor, capital, entrepreneurship. In return, firms are giving wages, interest, profit, rent. ऊपर देख लेते हैं. Let's look here. Here what is happening? Firms are giving goods and services. Firms are giving goods and services. Households are giving their expenditure or their money. So I can say that products are being exchanged here. Products are being exchanged here. है ना? Clear? This is evident. So I am just redrawing this model now. I am redrawing this model. I am saying that on one side there are households. On one side there are firms. ठीक है? Households are giving land, labor, capital and entrepreneurship. Firms are returning wages, interest, profit and rent. And this thing here, this is the, I can call it the factor market, because factors of production are being exchanged. Then firms are giving their goods and services. Households in return are giving their expenditure. And in return, I can call this place the product market.
हमने क्या देखा कि इस सर्कुलर फ्लो में 100 रुपीज वॉज कॉन्स्टेंटली बीइंग सर्कुलेटेड। मैं जाता था, 100 रुपीज मुझे मिलते थे, मैं 100 रुपीज खर्च करता था। आई यूज्ड टू गेट बर्गर्स वर्थ 100 रुपीज, ईट देम, गो टू स्लीप, नेक्स्ट डे अगेन गो टू वर्क। ठीक है, बट दिस इज नॉट हाउ अ रियल इकोनॉमी ऑपरेट्स। देयर आर अदर फैक्टर्स इन दिस इकोनॉमी। लेट्स नाउ ऐड वन फैक्टर एट अ टाइम। एक एक करके एक फैक्टर ऐड करते हैं। पहला लेट अस ऐड द फैक्टर ऑफ गवर्नमेंट। What does government do in any economy? How does government get money in any economy? Government will tax the economy. Government यहाँ क्या करेगी? Government will tax the economy. अभी इस इकोनॉमी में 100 रुपीज सर्कुलेट हो रहे हैं। याद रखना, राइट नाउ 100 रुपीज आर बीइंग सर्कुलेटेड। गवर्नमेंट आके टैक्स लेती है। गवर्नमेंट हाउस होल्ड से टैक्स लेगी या फर्म से? गवर्नमेंट विल टेक टैक्स फ्रॉम हाउस होल्ड और फर्म? चलो शुक्र है कुछ लोगों ने बोथ तो लिखा। भाई गवर्नमेंट टेक्स टैक्स फ्रॉम हाउस होल्ड ऑल्सो। हाउस होल्ड मीन वॉट हियर? यार हाउस होल्ड सिंपली मीन पीपल। याद रखना, ये हाउस होल्ड इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट पीपल। तो गवर्नमेंट लोगों से भी टैक्स लेगी। गवर्नमेंट विल टेक इनकम टैक्स फ्रॉम पीपल। गवर्नमेंट विल ऑल्सो टेक टैक्स फ्रॉम फर्म्स। कंपनी से भी तो टैक्स लेती है, कॉर्पोरेट टैक्स भी है। कंपनीज ऑल्सो पे टैक्स। मान लो, लेट्स अज्यूम that government says that we will tax 20% of your income. गवर्नमेंट कहती है कि we will tax 20% of your income. तो अब क्या हुआ? आज से गवर्नमेंट ने टैक्स करना स्टार्ट किया। आज से, कल तक टैक्स नहीं था। फ्रॉम टुडे गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड टैक्सिंग। टुडे आई विल गो टू वर्क। स्टेप 1, आई विल गो टू वर्क। Sarrthi IAS will give me 100 rupees. Once I get this 100 rupees, government says give 20 rupees to me. Government taxes me at 20 rupees. अब मेरे पास कितने रह गए? I am now left with rupees 80. I am left with only rupees 80. अब I can only spend 80 rupees at McDonald's and get money worth 80 rupees and get goods worth 80 rupees. ठीक है, टू कीप इट सिंपल, मैं फर्म पे टैक्स नहीं लगा रहा। वैसे गवर्नमेंट विल टैक्स बोथ, गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगेगी, बट जस्ट टू कीप इट सिंपल टू अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट टैक्सिंग वन पर्सन, आई एम जस्ट टैक्सिंग माई सेल्फ। तो गवर्नमेंट के टैक्स लगाने से क्या हुआ? गवर्नमेंट टैक्स्ड मी एंड सेड गिव मी 20 रुपीज ऑफ टैक्स। If government said give me 20 rupees as tax, what happens to the amount of money that is now circulating in the economy? अब कितना पैसा सर्कुलेट कर रहा है इकोनॉमी में? See, understand this. This is, I think I should tell you this before. This is very, very important to understand. Understand this very, very clearly और ध्यान से समझना इस बात को। Government taxes me ₹20. गवर्नमेंट ने मुझे 20 रुपीज टैक्स किया। ठीक है, आई वेंट टू वर्क। समझना इस बात को। आई वेंट टू वर्क टू द फर्म। फर्म गेव मी सैलरी ऑफ ₹100। यहां तक ठीक है। गवर्नमेंट टैक्स ₹20। हाउ मच एम आई लेफ्ट विद? आई एम लेफ्ट विद 80 रुपीज नाउ। यहां तक तो क्लियर होगा। मेरे पास 80 रुपीज बचे हैं। नाउ आई विल गिव मनी टू द फर्म्स। आई विल डू एक्सपेंडिचर ऑफ ₹80। Now firms also have only ₹80. Firms के पास 80 रुपीज ही हैं। So next salary that will come will also be 80 rupees. हमने Sarrthi IAS और McDonald's दो फर्म का एग्जांपल लिया था। Let's say I also work at McDonald's. मैं काम भी McDonald's पे करता हूं। ऐसे मान लेते हैं that I buy from McDonald's and I work at McDonald's. This will make the example very easy for you. I work at McDonald's and I buy things from McDonald's only. तो मैं मैकडॉनल्ड्स पे काम पे गया। आई वेंट टू मैकडॉनल्ड्स फॉर वर्क।
मैकडोनल्ड सेड वी विल गिव यू 100 रुपीज फॉर टुडेज वर्क। फिर मैंने मैकडोनल्ड से ही खाना खरीदता था मैं 100 रुपए का, एंड मैकडोनल्ड यूज्ड टू गिव मी लेट्स से 2 बर्गर्स। ये चल रहा था। अब आज मैं मैकडोनल्ड्स काम करने गया, ठीक है, मैकडोनल्ड्स ने मुझे 100 रुपीज वेजेस दी। When I have gotten 100 rupees from McDonald's, government decides to tax me 20 rupees. How much am I left with? I am now left with rupees 80. I am left with rupees 80. Now I spend these 80 rupees at McDonald's. मैंने 80 rupees McDonald's में spend कर दिए, ठीक है। In return, I got 2 burgers or whatever, 1.5 burger or whatever. Now, how much money does McDonald's have? अब मैकडोनल्ड्स के पास कितना पैसा है? How much money does McDonald's have? How much money does McDonald's have now? 80 rupees. McDonald's now has 80 rupees. है ना? How much salary can McDonald's give me now next day? What will be the, ये तो आज का काम हो गया, अब टैक्स शुरू हो गया। अब then I again go to work. How much salary will McDonald's give me now? अब मुझे McDonald's कितनी सैलरी देगा? हंड्रेड कैसे देगा यार? मैकडोनल्ड्स के पास है ही नहीं ना 100। मैकडोनल्ड्स डज नॉट हैव 100 रुपीज टू पे मी। आप लोग, कई लोग 100 लिख रहे हो, बट मैकडोनल्ड्स के पास तो 100 है ही नहीं। मैकडोनल्ड्स के पास तो 80 ही है। Assume that there is nobody else. There is just me and McDonald's in this economy. इस इकोनॉमी में 2 ही लोग हैं, एक मैं हूं, एक मैकडोनल्ड्स है, बस, और कोई नहीं है। आप, इट्स अंडरस्टैंडेबल यू विल थिंक यार और लोगों से पैसे लेके मैकडोनल्ड्स मुझे सैलरी दे देगा। इन दिस इकोनॉमी देयर आर ओनली 2 पीपल, देयर इज मी एंड देयर इज मैकडोनल्ड्स। आई वर्क एट मैकडोनल्ड्स एंड आई बाय द बर्गर्स फ्रॉम मैकडोनल्ड्स, ठीक है। नाउ टेल मी हाउ मच सैलरी मैकडोनल्ड्स विल गिव मी। There is nobody else. There is only 2 things. There is McDonald's and there is me. How much salary can McDonald's give me now? McDonald's only has 80 rupees. McDonald's के पास 80 rupees ही हैं. So McDonald's 80 rupees मुझे दे देगा. And now what is the money circulating? Now I will get 80 rupees. I will get 80 rupees. Now I will spend 80 rupees. Again I will get 80 rupees. I will spend 80 rupees. ये होता रहेगा. Now this will keep happening. 20 रुपए तो गवर्नमेंट ले गई. The money circulating now in the economy is rupees 80. ये बात समझ आ रही है? That now in the economy 80 rupees is circulating. 20 रुपए गवर्नमेंट ले गई टैक्स की तरह. ये बात समझ आ रही है? अरे आप मान लो एक बार टैक्स हुआ है, चलो आई विल राइट assumptions. I thought this was given, but कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं. In this economy there is only me and McDonald's. Tax will only be done one time. Taxation will only be exercised one time. In this economy there are only 2 people, me and McDonald's. Please assume these 2 things. Assume these 2 things. हम सिर्फ एक चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं. In this economy there is only me and McDonald's. Tax will happen only one time. उसके बाद there is no tax. ठीक है? अब बताओ, what is the money circulating in the economy? How much money is circulating in the economy now? How much money is circulating in the economy now? अब बताओ.
80 रुपीज, पहले 100 रुपीज था, पहले 100 रुपीज वो सर्कुलेटिंग, गवर्नमेंट आई 20 रुपीज ले गई, नाउ 80 रुपीज इज सर्कुलेटिंग, है ना. दिस टैक्सेशन, बिफोर देयर वाज दिस टैक्सेशन, अब आप समझना ध्यान से, बिफोर देयर वाज एनी सॉर्ट ऑफ टैक्सेशन, what was the money circulating in the economy? 100 rupees. After there is taxation, what is the money circulating in the economy? 80 rupees. पहले मैं 100 रुपीज कमाता था मैकडॉनल्ड से, 100 रुपीज मैकडॉनल्ड्स में खर्च करता था, वही 100 रुपीज कमाता था, वही खर्च करता था, कमाता था, खर्च करता था. अब गवर्नमेंट ने कहा कि यार एक बार हम आपसे टैक्स लेंगे, मेरे पास 80 रुपीज ही छोड़ दिए, मैं गया और मैंने यहां पर जाके 80 रुपीज दिए. Now these firms, what is the option that they have? They have to pay me rupees 80. इनके पास 80 रुपीज ही बचे, they'll pay me rupees 80. We'll understand this in a lot more detail. Right? अभी बस हम एक overall view दे रहे हैं. Firms will now pay me rupees 80. 80 is circulating. So this tax is leading to money leaking from the circular flow. Because of this tax, money has started to leak from the circular flow. पहले circular flow में 100 रुपए थे, अब 20 रुपीज टैक्स में चला गया. It is out of the circular flow. 20 रुपए बाहर आ गया circular flow से, and now 80 rupees is circulating. Similarly, government will tax firms also. Government takes tax from firms also. But government also spends. Government also spends in an economy. Government spends to provide public goods. So government will also spend in an economy and provide public goods. So government will also spend and provide public goods. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. इसी सेम इकोनॉमी में गवर्नमेंट says that we will give McDonald's the project of delivery and we will give you 20 rupees in the next year. एक साल गवर्नमेंट ने मुझे टैक्स किया, अगले साल गवर्नमेंट ने बोला कि हम मैकडॉनल्ड्स को कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उस प्रोजेक्ट की वैल्यू 20 रुपीज है. नाउ व्हाट इज द मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी? गवर्नमेंट ने पहले 20 रुपीज लिए, उसके बाद अगले साल गवर्नमेंट ने बोला कि हम मैकडॉनल्ड्स को एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं, प्रोजेक्ट इज टू फीड सम पीपल, यू विल फीड सम पीपल and for that we are paying you 20 rupees. Now what is the money circulating in the economy? अब कितना पैसा सर्कुलेट कर रहा है? It's back to 100. It is back to 100 now. Don't worry, हम इसको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं. So what is happening is there are households, there are firms. The simplest explanation of circular model is कि households हैं, firms हैं, household provide land, labor, capital, entrepreneurship. In return, households get wages, interest, profit, and rent. Households do expenditure, and firms provides goods and services. This is the circular flow. In this, there is one actor called the government. Government takes money away from the circular flow. Government can take money away from the circular flow by taxing. जब गवर्नमेंट टैक्स करती है, मनी मूव्स आउट ऑफ द सर्कुलर फ्लो. जब गवर्नमेंट ने टैक्स किया तो हम 100 से 80 पे आ गए थे. बट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो स्पेंड. Government can also spend, and by this expenditure or by this spending, government can put back money into the circular flow. Government can put money back into the circular flow. पहले गवर्नमेंट ने टैक्स किया था 20 रुपीज, तो सर्कुलर फ्लो में 100 की जगह 80 रुपीज रह गए थे, राइट? In the first case, government had decided to tax. Government had taxed me, तो 80 रुपीज रह गए थे. क्या टोटल तो 100 ही है ना, ऐसे सोचो, टोटल 100 ही है. गवर्नमेंट ने मेरे से 20 ले लिए,
100 इज सर्कुलेटिंग, 100 ऐसे घूम रहे हैं, बीच में गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने मेरे से 20 रुपए चुरा लिए, अब कितने घूमेंगे वापस? 80 विल सर्कुलेट. नाउ गवर्नमेंट केम, 80 इज सर्कुलेटिंग एंड गवर्नमेंट से हम 20 किसी फर्म को दे रहे हैं. 80 घूम रहे थे, गवर्नमेंट आई, मुझे 20 दे दिए. नाउ 100 अगेन विल सर्कुलेट. राइट, ये बात क्लियर है? द रेड एरो हियर रिप्रेजेंट्स अ लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, ग्रीन एरो represents injection into the circular flow. Leakage is taking money away from circular flow, green arrow is putting money back into circular flow. One actor is government. Is this clear? ये गवर्नमेंट वाला रोल क्लियर है? ऑल्दो वी विल सी दिस इन अ लॉट मोर डिटेल. हमें एग्रीगेट डिमांड को डिराइव करना है तो हमें इसमें थोड़ा और डिटेल में देखना होगा, बट जस्ट टू गेट एन आइडिया. ठीक है, चलो लेट्स नाउ कंसिडर वन मोर फैक्टर. अभी गवर्नमेंट का फैक्टर हमने कंसिडर किया, अब इसी सर्कुलर फ्लो में एक और फैक्टर कंसिडर करते हैं. ठीक है, स्टेप 1 इज आई गो टू वर्क, आई गेट मनी इन रिटर्न. आज मैंने क्या किया, मेरे को 100 रुपीज सैलरी मिली थी, आई गॉट 100 रुपीज सैलरी. This 100 rupees I decided that I will go to a bank, and in my bank I will put ₹20 as savings. मुझे एक बारी में अपनी पूरी सैलरी स्पेंड नहीं करनी. I say that I have put 20 rupees as savings. I went to McDonald's gave me 100 rupees. 100 rupees में से 20 मैं बैंक में छोड़ आया. Then I came home. Now I said, okay, now I will spend money. Now how much money will circulate in the economy? Now how much money will circulate in the economy? Very good. 80 rupees will circulate. This savings represents a leakage of 20 rupees. ठीक है, okay. Now McDonald's goes to the bank. McDonald's goes to the bank and says, please provide me a loan. Please provide me a type of loan. कितने का लोन? मुझे 20 रुपीज का लोन चाहिए. बैंक के पास खुद का पैसा तो नहीं है. बैंक इज लोनिंग आउट योर एंड माई मनी ओनली. So bank says, okay, McDonald's, we will give you a loan, or rather we will give you an investment of ₹20. Now how much money is circulating in the economy? Now how much money is circulating in the economy? $100 is circulating again. So now I can say there is a second factor in the circular flow model. जो basic model मैंने पढ़ा है हाउसहोल्ड और फर्म में, उसमें फर्स्ट फैक्टर था गवर्नमेंट. There is a second factor called banks. There is a second factor of banks. Savings leads to leakages from the circular flow. Saving हुई तो 20 रुपीज कम हो गए, 80 सर्कुलेट होने लग गए. इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंजेक्शन. इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, वापस इट कम्स बैक टू 100. ठीक है, ओके. अब लेट्स टेक थर्ड केस. अब थर्ड, गवर्नमेंट को भी हटाओ, बैंक को भी हटाओ, एक थर्ड फैक्टर अब है, उसको देखना है. I went to McDonald's to work. Step 1. I went to McDonald's to work. I gave my labor. In return, I got 100 rupees. Today I said that ये जो 100 rupees मेरे को मिले हैं, ये जो 100 rupees मेरे को मिले हैं, इससे मैं 20 rupees से ₹20 से तो बाहर से एक बुक मंगाऊंगा.
I will order something from USA from 20 rupees. Rest 80 I will spend on McDonald's. तो मेरे पास 100 rupees थे, मैंने क्या किया, out of these 100, 20 I spent on some book in the Amazon, on Amazon website. 20 rupees की मैंने कोई बुक खरीद ली Amazon website से. Where have these 20 rupees gone now? They've effectively gone to USA. अमेरिका में चले गए हैं ये 20 रुपीज. बाकी जो बचे हुए 80 हैं वो मैंने स्पेंड कर दिए मैकडॉनल्ड्स में. व्हाट इज द मनी दैट इज नाउ सर्कुलेटिंग इन माय इकोनॉमी? मेरी इकोनॉमी में क्या सर्कुलेट हो रहा है? ये 20 रुपए तो यूएस चले गए. नाउ टेल मी, शुड आई कॉल दिस रेड एरो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट? ध्यान से सुनो. Should I call this red arrow import or export? This third red arrow, should I call this import or export? इसमें आधे लोग गलत कैसे दे सकते हो यार? So many people are writing export. यार आप सोचो, what is happening in this case? I am in India, मैं इंडिया में हूं, मैं इंडिया से 20 रुपीज यूएस से भेज रहा हूं, यूएसए से एक बुक आ रही है इंडिया. यही हो रहा है ना? ये इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है? यही तो हो रहा है. दिस इज एन इंपोर्ट और एन एक्सपोर्ट फॉर इंडिया. इंडिया इज इंपोर्टिंग बुक्स और इंडिया इज एक्सपोर्टिंग बुक्स. इसमें कैसे डाउट है आप लोगों को? This is an import. So I can say that third factor here is that because of imports, there is leakage from the economy. इंपोर्ट किया हमने, इंपोर्ट में गुड्स कम इनटू इंडिया. यहां इंपोर्ट लिखा है और एरो बाहर का है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही है. ध्यान से सुनो, एरो इज गोइंग आउट, एरो है बाहर का, राइट? आई जस्ट मेक दिस अ लिटिल बिट इजियर. वेट, एरो मैंने बनाया है बाहर का, एरो मैं बना रहा हूं ऐसे, ठीक है, और लिख रहा हूं मैं इंपोर्ट, क्योंकि मनी इज मूविंग आउट, गुड्स आर कमिंग इन. व्हेन गुड्स कम इनटू इंडिया इट्स कॉल्ड इंपोर्ट, है ना? मनी इज मूविंग आउट. 20 रुपए का मैंने पैसा बाहर भेजा टू, लेट्स से, एंड आई विल कॉल दिस थर्ड फैक्टर इंटरनेशनल मार्केट. मैंने पैसे बाहर भेजे, मनी हैज गॉन आउट, गुड्स हैव कम इन, दिस इज एन इंपोर्ट. ठीक है. अब बिकॉज ऑफ दिस इंपोर्ट दिस वाज आल्सो अ लीकेज, एंड व्हाट हैपेंड? 20 रुपीज आर नाउ मूविंग आउट ऑफ माय सर्कुलर फ्लो. ठीक है. हाउ मच मनी इज लेफ्ट? 80 इज लेफ्ट. सो आई कैन से द थर्ड लीकेज इज इंपोर्ट्स. अब somebody from USA orders food from India. Somebody from USA orders food from, मेरे कंपनी में तो एक ही कंपनी है मैकडॉनल्ड्स, किसी ने यूएसए में मैकडॉनल्ड्स से खाना मंगा लिया. तो नाउ फूड विल गो फ्रॉम दिस फर्म, फूड विल गो आउट. व्हाट विल कम इन? मनी विल कम इन. तो लेट्स से यूएसए से, फ्रॉम यूएसए 20 rupees come into the country and food goes out. This is now an export. I hope you can understand this is an export. Because food has gone out, food I have sent abroad, goods have gone out, this is an export. Now what is the money circulating? What is the money circulating now? What is the money circulating?
it's back to 100 rupees. It's back to 100 rupees. This is all the economic activity that is happening in any economy. दुनिया की किसी भी इकोनॉमी में यही हो रहा है. If you look at the Indian economy right now, this is exactly what is happening. आप समझो इस बात को, और इस चीज को मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं. हाउस होल्ड का मतलब यहां पर क्या है? पीपल. मेरा केस लेते हैं. In people, let's take my case. You can take the case of your parents. You will understand. I work at Sarrthi IAS. Sarrthi IAS pays me certain wages. So I get some income. Now this income from here, either I can spend this money to pay my tax, या तो मैं इससे टैक्स भर लूं, या फिर मैं इससे कोई बाहर का गुड खरीद लूं. आई कैन इंपोर्ट समथिंग. या फिर मैं इससे कोई इंडियन फर्म से कोई गुड खरीद लूं, या फिर मैं इसको बैंक में डालाऊं. यही 4 ऑप्शन है ना मेरे पास. आपके पास भी. आपने मान लो सारथी आईएएस में काम किया एंड वी पे यू अ सैलरी. You can only do 4 things with it. Either you can buy some goods and services, right? You can buy some goods and services from India. You can buy some goods and services from abroad. ये 2 ऑप्शन है. तीसरा, you can pay tax. Fourth, you can do savings. Now, this savings includes that yes, you can buy different instruments of the capital market. You can buy shares, you can buy bonds, you can buy mutual funds, but ultimately some instrument of financial market. कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हो. सेविंग अकाउंट इज वन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. यू कैन बाय सम सेविंग इंस्ट्रूमेंट और सम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. यू कैन ईदर इंपोर्ट सम गुड, यू कैन बाय सम अदर गुड, और यू कैन पे योर टैक्स मनी. देयर इज नो फोर्थ ऑप्शन. ये समझ आ रहा है? एनी वर्ल्ड्स इकोनॉमी ओनली हैज दीज थिंग्स दैट आर वर्किंग. दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल, एंड दिस इज हाउ एनी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड वर्क्स. किसी इकोनॉमी में सिर्फ यही एक्टिविटीज हो रही हैं. एंड यू कैन वेरीफाई दिस बाय लुकिंग एट अ हाउस होल्ड. आप किसी भी हाउस होल्ड को देख लेना. दिस इज हाउ, और इवन योर ओन केस, दिस इज वेयर यू कैन स्पेंड योर मनी, और आप कुछ नहीं कर सकते. दिस इज अगेन, जैसे मैंने आपको कहा था, वी आर नाउ लुकिंग एट द इकोनॉमी फ्रॉम अ टेलीस्कोप. दिस इज अ ब्रॉड पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी. This is a broad picture of the economy. है ना? Any economy works like this, and this is the circular flow of income model. Now to just put it in a simplified fashion, यहां पर ये पूरा circular flow बनाया हुआ है. I have made this flow. See, this is the easy way of looking at it. I have taken the 3 factors out. One factor is government, one factor is financial institutions, and one factor is foreign sector. So arrows you can see. First arrow. अब इस डायग्राम को ध्यान से समझते हैं, then I'll give you a small break. Look at this diagram very carefully. Households first give factors of production to firms. Households give factors of production to firms. Firms in return give wages, interest, profit, and rent. Households then spend this money on goods and services. In return, firms give them goods and services. यही चल रहा है. This is exactly what is happening. There are 3 factors: government, financial institutions, and foreign sector. Taxes to the government, saving to financial institutions, and imports from the foreign sector lead to leakages. These were the cases where money was coming down to rupees 80, 100 से 80 हो रहा था इन तीनों केसेस में. And government spending, financial investment और export से जो revenue आएगा, export से जो पैसा आएगा. These 3 green arrows are injections in the economy. इन तीनों केसेस में 80 से वापस 100 पे पहुंच रहा था. This is how any economy works. अब there is interdependence of all 5 sectors, right?
पांचों सेक्टर इंडिपेंडेंट है, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फॉरेन सेक्टर, सारे कनेक्टेड हैं. दिस इज कनेक्टेड देयर, यू कैन सी दिस. And we can use this circular flow of income model to calculate national income. We can use this to calculate the national income of India, right? Whatever this is being received, ये जो receive हो रहा है, ये this is national income of India. India के जो लोग चीजें receive कर रहे हैं, although national income accounting GDP is what we'll come to, but I can use this to calculate the national income of India. इतना समझ लेते हैं, right? This is the idea here. ठीक है, this is the circular flow of circular flow of income model. So just again, if I have to sum up this model, I'll just draw a summary here, and I will recommend that you also draw this summary with me. There are households and firms. सबसे पहले what happens? Households give factors of production to firms. Firms in return give wages, interest, profit and rent. Households then do expenditure on these firms. Households को पैसे मिले, households ने पैसे खर्च किए, firms ने दिए goods and services. ठीक है, अब I will call this arrow 1, this arrow 2, this arrow 3, या इसको 4 बोलना चाहिए आइडियली. This is 4 and this is 3. Which of these is showing the national income of India? Which of these is showing India's national income? National income का मतलब है income of all people. आप अभी के लिए ये मान लो, broad level पे income of all the people. Which of these arrows is showing? Good. Arrow number 2, this arrow is showing income of people will be like this, either wages, interest, profit or rent. ठीक है. So if I want to calculate the national income, अगर मुझे national income calculate करनी है, I can calculate whatever is the value of number 2. नंबर 2 एरो की जो वैल्यू है वो मैं कैलकुलेट कर लूं, मुझे नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी. अब इज देयर समथिंग एल्स आई कैन कैलकुलेट इफ आई वांट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम? कैन, देखो, national income is being shown by this arrow. It is this arrow that is showing national income. This arrow might be equal to some other arrows. This arrow might be equal to some other arrows. That's a different story, right? Are there some other arrows that I can calculate? 3 and 4 both? देखो, अगर आप 3 बोल रहे हो तो 4 तो है ही ना यार. 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है कि हाउस होल्ड ने कितना खर्चा किया. आप कह रहे हो या तो उनकी इनकम कैलकुलेट कर लो या उनका खर्चा कैलकुलेट कर लो. कैलकुलेट देयर एक्सपेंडिचर. इसमें मैंने ना गवर्नमेंट बनाई अभी, ना मैंने इसमें बैंक्स बनाए, ना मैंने इसमें फॉरेन सेक्टर बनाया. जान के नहीं बनाया, टू कीप इट सिंपल. आप कह रहे हो कि हाउस होल्ड्स क्या तो इनकम कैलकुलेट कर लो. यहां पर तो ना वो टैक्स दे सकते, ना वो सेविंग कर सकते, ना वो इंपोर्ट कर सकते. तो क्या करेंगे? सारा खर्चा ही करेंगे. तो उनका खर्चा कैलकुलेट कर लो. तो नंबर 3 कैलकुलेट कर लो. यू आर सेइंग दैट जस्ट कैलकुलेट देयर एक्सपेंडिचर, कैलकुलेट नंबर 3 विच इज देयर एक्सपेंडिचर. मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मैं उनका एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करूं तो 3 और 4 तो बराबर ही होंगे ना. फिर 4 क्या है? 3 is what I have spent on. Let's say I spent 100 rupees. आपको ये बात पता है मैंने 100 रुपीज खर्च किए और आपको पता है कि मुझे ये बॉटल मिली है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है ना कि इस बॉटल की वैल्यू अब 100 रुपीज ही है. 4 is whatever goods and services you receive. जितना खर्चा करोगे उतने ही तो गुड्स और सर्विसेज मिलेंगे. तो if they have spent
100 rupees. I can either calculate their expenditure or I can calculate the value of these goods and services. I can calculate number 4, value of goods and services. समझ आ रहा है? I can calculate national income by 2, 3 और 4. मैं ऐसे calculate करूं, ऐसे calculate करूं, ऐसे calculate करूं, तीनों ही सेम आएगा. All three will be the same. हमने अभी calculate किया है 100 rupees, 100 rupees, 80 rupees मैंने अभी calculate किया है. Right? These are the 3 ways to calculate GDP. अभी जब आप 100 बता रहे थे या 80 बता रहे थे, ऐसे बेसिस पे बता रहे थे ना, तो जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं. Now, the national income model has some other factors also. There are 3 other factors. One factor is government. One factor is international market. One factor is financial intermediaries or financial market. Government, if they decide that we will tax if there are imports or there is saving, this leads to leakage from the circular flow. Agar government spends money, government will spend money. If international market में हम export करेंगे और revenue आएगा and there is investment into the economy, it will lead to injections. So red arrows are leakages, green arrows are injections, and this is how any economy in the world works. Now I will give you a break for 5 minutes, provided के break में rest करने के अलावा you also think about this question कि इस मॉडल में what are the problems of this model. इस मॉडल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं. I'll give you 5 minutes break. Please think of some of the problems of this model and draw this model in your notebook.
Sorry guys, sorry for the delay. Actually had to go get my coffee. Sorry about that. All right. हाँ जी, बताओ. Exactly 7 मिनट मिल गए आपको मेंस का आंसर लिखने के लिए. What are the problems with this model? इस मॉडल में प्रॉब्लम क्या है? एक सेकंड वेट, जस्ट होल्ड ऑन. देखो, पहले लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मॉडल है किस चीज के लिए, तभी तो प्रॉब्लम समझ आएगी. दिस मॉडल इज टू शो, ये एक मॉडल है जो एक कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी को शो करता है, और इस बेसिस पे मैं नेशनल इनकम कैलकुलेशन करता हूं. यानी कि लेट्स से आई डू कैलकुलेशंस ऑफ जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल. ठीक है, ये है इस मॉडल का काम. अब अगर आप बोल रहे हो कि यार इस मॉडल की प्रॉब्लम है कि ये मॉडल इन्फ्लेशन शो नहीं करता, तो इस मॉडल का काम ही नहीं है इन्फ्लेशन शो करना. इस मॉडल का काम है नेशन की इकोनॉमिक एक्टिविटी शो करना, ताकि हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकें. ये मॉडल नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए 3 ऑप्शन देता है कि या तो आप डायरेक्टली इनकम कैलकुलेट कर लो, या आप एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लो, या आप प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लो कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हैं. इन तीनों तरीके से आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? अब इफ दिस मॉडल इज गिविंग ऑल दीज 3 ऑप्शंस, नाउ टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज इन दिस मॉडल. इस मॉडल में क्या प्रॉब्लम्स हैं? एक सेकंड, अगेन मैं धीरे धीरे चैट ऑन करूंगा, मैं सबके आंसर्स देखना चाहता हूं. देखो, अगेन आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, यार ऐसे केसेस में ये नहीं हो सकता कि आप कुछ भी लिख दो, है ना. एवरी वर्ड दैट यू हैव टू राइट इन दिस चैट, इट हैज टू मीन समथिंग. कोई कह रहा है डबल काउंटिंग. कौन सी चीज यहां पे डबल काउंट हो रही है भाई? विच थिंग इज बीइंग काउंटेड डबल? कौन सी चीज बार बार काउंट हो रही है? कुछ भी डबल काउंट नहीं हो रहा. इनकम इज काउंटेड सेपरेटली, goods and services are counted separately, factors of production are counted separately, exports, imports, investment, savings, सब कुछ अलग अलग काउंट हो रहा है. कोई कह रहा है रेशियो ऑफ इंजेक्शंस एंड लीकेजेस विल नॉट बी सेम. इंजेक्शंस एंड लीकेजेस ये सेम नहीं होगा. तो ऑब्वियसली सेम नहीं होगा. क्या हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स सेम है? नहीं. क्या हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट सेम है? नहीं. क्या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और गवर्नमेंट का टैक्सेशन सेम है? ये भी सेम नहीं है. Sometimes government will spend more than their tax. सुना होगा आपने वर्ड फिस्कल डेफिसिट. गवर्नमेंट इज ऑल्सो बोरोइंग, गवर्नमेंट ऑल्सो इज इन डेट, क्योंकि गवर्नमेंट ने खर्चा ज्यादा कर लिया है, टैक्स कम मिल रहा है. तो हाँ बिल्कुल, द रेशियो ऑफ इंजेक्शंस एंड लीकेजेस विल नॉट बी सेम, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ दिस मॉडल. कोई कह रहा है रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस इसमें शो नहीं हो रही. बताओ इसमें रेमिटेंसेस कहां शो हो रही हैं? दिस एक्सपोर्ट इज नॉट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. This export was showing money coming into the country. Remittances is nothing but money coming into the country. मैंने एक्सपोर्ट के थ्रू दिखाया जो भी इंटरनेशनली पैसा इंडिया में आ रहा है वो यहां पर एक्सपोर्ट लिखा हुआ है. Remittance is technically a gift from abroad, right? But this was meant to show any money coming from abroad, and this red arrow shows any money going abroad. तो ये भी शो हो रहा है. कौशिक ने लिखा है अनपेड वर्क नॉट कंसिडर्ड. This is correct. Where is this model showing work? Here. जैसे मेरा वर्क यहां पर लेबर दिखा रहा है ना? That I give my labor to Sarrthi IAS, in return I get wages. What about unpaid work? This was a model to show economic activity, but what about unpaid work? For example, the work that my mom made this coffee for me.
Does this not help my productivity? It does. Will I pay my mother for this coffee? Of course not. Is this work? Yes. Is this shown in this model? No. This is the problem of this model. समझ आ रहा है? Second, model only is showing economic activity. What about externality? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हो रही है? क्या इस इकोनॉमिक एक्टिविटी से कुछ क्लाइमेट चेंज हो रहा है? क्या इस इकोनॉमिक एक्टिविटी से कुछ रिसोर्स डिप्लीशन हो रही है? क्या इस इकोनॉमिक एक्टिविटी से कोई सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम हो रही है? आर दीज प्रॉब्लम्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस मॉडल? क्या ये चीज दिखा रहा है ये मॉडल? नो, इट्स नॉट शोइंग दिस. Right? External things are not being shown in this model. Right? So this model does not look at energy being used, does not look at natural materials being used for economic activity. This model wants to show national income, but it only shows the income for work that is paid for, यानी कि monetized work, जिस पैसे के लिए, जिस काम के लिए पैसे मिलते हैं. जैसे मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने के लिए पैसे मिलते हैं, that's monetized work. Making this coffee is also helping me teach. But इस कॉफी को बनाने के लिए I did not pay my mother because it is her care for me. This is an unpaid care economy. ये इस मॉडल में शो नहीं होती. अब monetized economy is formal work, जैसे कि टीचर्स, वर्कर्स, बैंकर्स. केयर इकोनॉमी इज अनपेड वर्क. नाउ दिस अनपेड वर्क traditionally women have performed these roles as mothers and wives. Traditionally. इसका मतलब ये नहीं है that this unpaid work is the job of women. Absolutely not. It is equally the job of men and women. If you are a father and there is your wife who is of course the mother of the child, it is the responsibility of both of you to ensure that the child gets good parenting. It is not a woman's job to look after children alone. It is not only her job, it is also the parent's job. It is the parent's job, it is the complete family's job, it is also the father's job. But traditionally, unfortunately, these roles have been performed by women. So women, for example, look after the sick, women care for the elderly, women look after children, women manage households. Traditionally, women have been given these roles. Their unpaid work, their economy of care does not get any accounting in this model. इस मॉडल में उसकी अकाउंटिंग नहीं होती. अब this also does not look at voluntary work. किसी ने लेट से किसी एनजीओ के लिए काम किया, कोई डोनेशन दी, this also is not accounted in this model. Right? Sharing of knowledge, जैसे कि विकिपीडिया पे फॉर एग्जांपल लोग फ्री में एंट्रीज डाल रहे हैं. राइट? इसका यहां पर कोई अकाउंटिंग दिख रहा है? मैंने आज सोचा कि मैं विकिपीडिया पे एक फ्री में एक एंट्री डालूंगा. राइट? विकिपीडिया आई विल अपडेट वन एंट्री अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल. यही एंट्री मैं पूरी लिखूंगा, उसमें फ्री में करूंगा मैं काम. Did I do work? Yes, I provided my intellectual work, some physical work of typing also. Did I get any remuneration, any money? No. तो क्या काम ही नहीं हुआ कोई? इस मॉडल के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ. And it does not look at common resources such as forests, such as rivers, such as clean water. Then again inequality की जो प्रॉब्लम है वो इस मॉडल में शो ही नहीं होती. राइट? कि जिन लोग की सोर्स ऑफ अर्निंग रेंट और प्रॉफिट है, there tends to be concentration of wealth here, but this is not shown. This is again not shown in this model. So this model has a lot of problems. So there is an economist by the name of Kate Raworth. She has written this book called Donut Economics. Donut here means this.
वो कह रही है कि ये जो आपका डोनट है ना, ये डोनट बीच में से खोखला है. So this model, this circular flow of income model, this is not a good model because of its problems जो मैंने आपको दिखाई. So she says that more likely we need to have a embedded economy model. इस embedded economy model में ये उनका मॉडल है, ये हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. This is just for understanding that in the model, and we don't have to look के कैसे कहां पे क्या आया है. She's just made a very simple thing that there is the economy में there is the household, economy में there is the market, there are common resources and there is the state and money circulates between them. इतना ही बताती है वो, बड़ा सिंपल. कहती है बट ये जो इकोनॉमी है ये एक सोसाइटी के अंदर है, ये जो सोसाइटी है ये अर्थ के अंदर है. तो जो हम हीट जनरेट कर रहे हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम लिविंग रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, जो हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं, वो सबको हमें इसमें काउंट करना चाहिए. सो देयर वी हैव अ मोर रियलिस्टिक मॉडल ऑफ an embedded economy, an economy that is embedded inside society and inside earth. So people are more than workers that are supplying labor in return for wages. People are actually members of societies and the economy nests in society and the living world. This model would look at care economy also. It would look at a more realistic picture of the economy. ठीक है. अब होता क्या है कि कभी कभी स्पेशली जब हम मेंस में जाते हैं तो एग्जैक्टली ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं और फिर रियलाइज होता है कि इकोनॉमी को रटना नहीं था. रीड द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड एंड आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू राइट हियर. समझ आया? देखो, it's not that if we just start practicing an embedded economy, we will. Embedded economy simply means that you recognize the care work. You recognize care work. It's not like आप बोलो that it is only. See, this is the difference in looking at GDP and looking at other indicators of development. This is growth versus development difference. ये कह रहे हैं कि आप डिफरेंशिएट करो केयर इकोनॉमी को और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी को. हम अभी मोनेटाइज्ड इकोनॉमी देख रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल देख रहे हैं. We don't look at care economy, we don't look at an embedded economy. जब हम embedded economy देखेंगे, when we look at an embedded economy, we will recognize care work. ठीक है? And हमें recognize किया जाएगा that this care work also needs to be compensated for. ठीक है? आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, आपको और समझ आएगा इस आंसर में लिखना क्या था. Let's say this is a husband. ठीक है. He goes to work every day and he works very hard. 12 to 14 hours a day he is working. ठीक है. He works for a company and in the return for this work, this company pays him certain money and he comes back home. अब हमें तो लग रहा है कि ये साइकिल कंप्लीट है, पर ये साइकिल कंप्लीट है नहीं. When he comes back home, his wife is there. Wife will first, she will look after the kids. She will put food on the table for him. Again, traditionally this role is ascribed to a wife, does not mean कि wife का काम है. ठीक है? This is just an example. When he is sick, wife will care after him. Wife will make sure he gets up on time, he gets proper sleep. Wife will make sure that his clothes are, let's say, ironed and clean. Who is the company paying?
The company only pays the husband. But can you see that both husband and wife are working for the company? It is not like only husband is working, even wife is working. If the husband does not have proper sleep, if he is not cared for, if he does not have food, if his kids are not looked after, if his clothes are not cleaned, can he go and work? No. But is her contribution being recognized here? Does anybody say that she is also working? She has to deal with the burden of society. तो यहां पर यही बात है कि आप इस केयर इकोनॉमी को रिकॉग्नाइज करो. जैसे आप मोनेटाइज्ड इकोनॉमी को रिकॉग्नाइज करते हो, जैसे आप यहां पर ये बोलोगे कि अरे यार ये आदमी तो, इफ लेट्स से दिस कपल वाज इन फ्रंट ऑफ यू, रियल प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, क्या बात होती, अरे यार वो तो बहुत मेहनत करता है, उनकी बीवी तो देखो घर पे बैठती है. दैट इज नॉट द केस. If he is not working at the home, she is taking care of the home by herself. That is also huge work. इस कपल को अगर आप बाहर से देखोगे तो this is the comment people will pass, that he works very hard, she does nothing. But she is also looking after all these things. Both of them are working for the company. If she stops working one day, he will not be able to go to work. He will have to look after his kids. They are his kids also. He will have to spend time cleaning his clothes, spend time preparing food, spend time caring for, let's say, elders, his parents, spend time ensuring that he gets to sleep on time. और भी जो घर के हाउस होल्ड काम होंगे इनको करने पड़ेंगे. तो ये 12 घंटे से हट के पता चलेगा कि 6 घंटे पे आ गई आउटपुट. So she is also working. So the point here is, the point of that question was, empower and recognize this care economy. Recognize that this is also important. It is not merely the work of the husband. समझ आ रहा है? Can you understand this? Her work is also just as important as his work. ठीक है? Her work is just as important. So recognize. What is K. Travers saying? K. Travers is saying that, see, you need to recognize that the world is not merely working on money. The world is not merely an economy which is monetized. The economy of the world is embedded in various realities. It is embedded in a society. और इस सोसाइटी में कई लोगों को केयर वर्क करना पड़ता है. इसको भी रिकॉग्नाइज करो. जो लोग ये केयर वर्क कर रहे हैं उनको भी एम्पावर करो. एंड रिकॉग्नाइज दैट देयर कंट्रीब्यूशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. नाउ रीड द क्वेश्चन अगेन. पहले आप डिस्टिंग्विश करोगे दोनों को. देन इट विल से, हाउ कैन केयर इकोनॉमी बी ब्रॉट इनटू मोनेटाइज्ड इकोनॉमी थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट. अब वुमेन एम्पावरमेंट हमने पढ़ा हुआ है. केयर इकोनॉमी के फीचर्स हमें पता है. केयर इकोनॉमी में women are mainly participating. If you empower women, if you give them all of those things, the ability to control their lives, their ability to, influence decisions, access to social, economic and political resources, even this care work will get the same recognition as monetized economy gets. This was the question. अब आप समझ रहे हो क्यों कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है. ऐसे भी आप इस आंसर को लिख सकते हो, बट अगर आपको एम्बेडेड इकोनॉमी वाले पॉइंट पता है, अगर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल पता है, you can draw the circular flow of income model here and show why care economy is not recognized. You will 100% get 1 mark more. ठीक है? चलो अब अभी हमने देखा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल. मैं आपको, ये आपके लिए एक टेस्ट है. आई एम गिविंग यू 2 minutes. ड्रॉ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल ऑन अ फ्रेश पेज. बिल्कुल एक फ्रेश पेज लो, उस पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल ड्रॉ करो. 2 मिनट नहीं, 1 मिनट में बनना चाहिए. अपनी नोटबुक में एक फ्रेश पेज पे जस्ट ड्रॉ द मॉडल कंप्लीटली.
जल्दी ड्रॉ करो. Draw all the leakages, draw all the injections. Draw all the leakages and injections. ठीक है, चलिए. नाउ आई होप यू वर एबल टू ड्रॉ. जिससे नहीं बना, देखो दिस इज द वे टू ड्रॉ इट. जस्ट रिमेंबर, हाउसहोल्ड्स आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैसे भी बना सकते हो. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट, expenditure, goods and services. Then write three things: government, international market and financial intermediaries. यहाँ पर there will be leakages and injections. Leakage will be tax, injection will be government spending. Import revenue will be leakage, export revenue will be injection, saving will be leakage and the investment will be injection. ठीक है, इतनी ही जल्दी आपको बनाना है in your notebook. Now, we studied that when we are going to study macroeconomics, demand is going to get replaced by aggregate demand. So what is aggregate demand? Let's define aggregate demand first. What is aggregate demand? It is total spending on all goods and services in a period of time at a given price level. All spending, complete spending on goods and services in a period of time at a given price level. अब इसी मॉडल में let's try and understand who all can spend. ठीक है, ग्रीन से मार्क करूंगा, where all spending can happen. इस इकोनॉमी में टोटल स्पेंडिंग देखना चाह रहा हूं. एक तो है कि हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर कर लें. ठीक है, सो हाउसहोल्ड्स can do domestic expenditure, households can do foreign expenditure, households can also import certain items. वो बाहर पैसे भेजेंगे and they will import certain items. तो एक तो households हैं जो spending कर सकते हैं. पूरी इकोनॉमी यही दिख रही है मेरे को. I can see the entire economy here, है ना. तो एक तो household spending कर सकते हैं goods and services पे. यहां तक समझ आ रहा है. I am trying to count कि कौन कौन spend कर सकता है. Households can spend. Households can give money to firms, or households can send money abroad and get money, get some goods. Goods and services पे spending देख रहे हैं. और देख लेते हैं. Okay. Government can also spend on certain goods and services. Government can also spend. When government says I am spending, when government says I am spending, government can also spend on goods and services. मान लो government कहती है हमें एक रोड बनानी है. Government wants to make a road. Government will spend money to buy tar, concrete, engineering services. So government can also spend money. Now, government can also spend money domestically, and government can spend money in a foreign area. मतलब गवर्नमेंट भी ऐसे कर सकती है कि यार हम एक हाईवे बनाएंगे, जो कंक्रीट है उसको लेट्स से यूएसए से इंपोर्ट करेंगे. तो गवर्नमेंट कैन आल्सो स्पेंड मनी डोमेस्टिकली एंड फॉरेन. सो गवर्नमेंट कैन स्पेंड मनी, हाउसहोल्ड्स कैन स्पेंड मनी. मैं देखना चाह रहा हूं टोटल स्पेंडिंग. मैंने क्या बोला है, एग्रीगेट डिमांड की बात करना चाह रहा हूं मैं. आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट द एग्रीगेट डिमांड
I'm trying to calculate the total demand in this economy. Total demand in this economy can be the total spending on goods and services. Who can spend on goods and services? One, households can spend. Households can spend domestically, and households can spend in a foreign country. Second, government can spend. Government can spend domestically, government can spend in a foreign country. Third, is there anybody else who can spend on goods and services here? कोई और भी है क्या जो goods and services पे spend कर सकता है? पूरी इकोनॉमी आपके सामने है, ध्यान से जवाब देना. Is there anybody else who can spend? There are two more people who can spend on goods and services. Yes मत लिखो यार, बताओ who can spend? Firms can spend, international market can also be spent. Firms and international markets. Firms can spend and also international markets can spend. Firms, example ले लो, आपके सामने एक firm है सारथी IAS. Sarrthi IAS can spend on goods and services. Sarrthi IAS has spent on this good. Sarrthi IAS has spent on this good. So firms can also spend on goods and services. और फर्म्स कह सकती हैं कि या तो हम डोमेस्टिकली स्पेंड करेंगे, या तो हम ये पेन इंडिया से खरीदेंगे, या हम ये पेन यूएस से खरीदेंगे. Who else can spend? One more person is there. Who else can spend? इसके अलावा कौन है जो यहां पे स्पेंड कर सकता है? यार बैंक कांट स्पेंड. बैंक नहीं है, सॉरी, इट्स नॉट द बैंक. सॉरी, थिंक अबाउट इट. हाउ कैन बैंक स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज? सोचते नहीं हो ना. चलो कोई नहीं, देखो समझो. अब पहले बैंक की पोजीशन क्लियर करते हैं. बैंक में टू फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड. एक है कि बैंक की एम्प्लॉइज हैं, बैंक प्रॉफिट करता है. इन दैट कैपेसिटी द बैंक वर्क्स लाइक अ कंपनी ओनली ना. जैसे सारथी आईएएस के एम्प्लॉइज हैं, सारथी आईएएस सर्विसेज देता है, वैसे एक बैंक भी एक कंपनी है, राइट? बट एक बैंक का काम है एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. As a financial institution, what does a bank do? It takes savings and it gives loans. It takes savings and it gives loans. यहां पर जो बैंक की रिप्रेजेंटेशन है, इट इज एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तभी यहां पर बार बार पहला एग्जांपल देने के बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दिया हुआ है. बैंक इज नॉट एक्टिंग लाइक अ कंपनी हियर. जो बैंक कंपनी की तरह एक्ट कर रहा है वो तो यहां काउंट हो गया. आप समझ रहे हो, बैंक एक कंपनी भी है और बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी भी है. बैंक का काम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कराना भी है, और बैंक का काम प्रॉफिट करना भी है. बैंक का काम ये भी है कि वो अपने एम्प्लॉइज को पैसे दे, खर्चे भी करेगा, इन्वेस्टमेंट भी करेगा, सब करेगा. समझ आ रही है? बट हियर इन दिस केस वी आर लुकिंग एट ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये दिस इज बैंक एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. एंड ये जो रिप्रेजेंटेशन है, यहां पर बैंक एज कंपनी इंक्लूडेड है. डू यू अंडरस्टैंड नाउ? डू यू अंडरस्टैंड नाउ? ये बात बैंक वाली चीज क्लियर हो रही है? बैंक वाला डिफरेंस क्लियर हो रहा है? अब सी, the other person who can spend here is the, let's say, export person who is exporting goods to India. Let's say some foreigner. कोई एक अमेरिकन भी तो खर्च कर सकता है ना यहां पे पैसे. Some American can spend money in India. American can spend money in India. वो भी तो हम यहां काउंट करेंगे. ये वाला जो एरो है, ये this arrow also we have to count, right? है ना? तो मैं देखना चाह रहा था द आइडिया ऑफ एग्रीगेट डिमांड.
Aggregate demand is nothing but total spending on goods and services. Who can spend on goods and services? मैंने देखा households can spend, this is one. Second, I'm saying government can spend, this is two. Third, I'm saying firms can spend on goods and services, जैसे Sarrthi IAS can spend on goods and services, this is three. And number four, foreigners can spend. ठीक है? So if I want to now calculate, and look at this very carefully, if I now want to calculate aggregate demand of the economy, I should say aggregate demand of the economy is the spending done by households plus government plus firms plus foreigners. ठीक है? अब अगर मैं कहता हूं कि हाउसहोल्ड्स की जो स्पेंडिंग है, टोटल स्पेंडिंग डन बाय हाउसहोल्ड्स इज सी. टोटल स्पेंडिंग डन बाय हाउसहोल्ड्स इज सी. टोटल स्पेंडिंग डन बाय हाउसहोल्ड्स इज सी, नोन एज कंजम्पशन. टोटल स्पेंडिंग डन बाय फर्म्स इज आई. टोटल स्पेंडिंग डन बाय फर्म्स इज आई. एंड फर्म्स की जो स्पेंडिंग है, फर्म्स विल ओनली बाय कैपिटल गुड्स. देख रहे हो ना, फर्म्स सिर्फ कैपिटल गुड्स खरीद सकती हैं. फर्म्स डोंट बाय फूड, फर्म्स डोंट नीड इट, राइट? फर्म्स विल बाय फूड फॉर देयर एम्प्लॉइज, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. फर्म्स जनरली बाय कैपिटल गुड्स. फर्म्स की जो पूरी स्पेंडिंग है उसको मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इट इज मनी स्पेंट ऑन कैपिटल गुड्स. गवर्नमेंट की जो टोटल स्पेंडिंग है उसको मैं कहता हूं जी, यानी कि टोटल स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है? एंड लास्टली आई कॉल कि अगर कोई फॉरेनर, सम फॉरेनर इज स्पेंडिंग मनी इन इंडिया, दैट मींस इंडिया इज एक्सपोर्टिंग, तो मैं कहता हूं इंडियन एक्सपोर्ट्स. ठीक है? यहां तक क्लियर है? I want to calculate aggregate demand. Household की total spending is represented as C. Total spending is represented as C. Firms की as I, government की as G, and foreigners जो इंडिया में spend कर रहे हैं उसको मैं कहता हूं India's exports और X. अब देखो, अदिति पूछ रही है सर X minus M होना चाहिए, क्योंकि अदिति ने X minus M का फॉर्मूला रट रखा है कि यहां पर X minus M आता है. प्रांशु पूछ रहे हैं वेजेस. मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं? स्पेंडिंग. वेजेस क्या है? अर्निंग. अब आप में से कई लोगों ने फॉर्मूला रट रखा होगा, और क्योंकि आपको अभी एम नहीं दिख रहा, आपको लग रहा होगा कि मैं कोई गलती कर रहा हूं. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मगिंग अप इकोनॉमी. ठीक है? कोई पूछ रहा है वेजेस क्यों नहीं आ रहे? भाई वेजेस क्यों आएंगे? स्पेंडिंग कैलकुलेट कर रहे हैं. इज वेजेस माई स्पेंडिंग और माई अर्निंग? इट्स माई अर्निंग. I am calculating spending. है ना? ऐसा ही है ना अदिति? I mean, I'll not turn on the chat, but ऐसा ही है ना? X माइन, आपको याद है कि यहाँ पे X minus M आता है, अभी आएगा M. But the fact is, since you have not learned how to derive this formula, you have not learned, आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा ये, है ना? You must not have read this like this. So you have not learned, but you know कि end में X minus M आना है. बताओ ऐसा ही है ना? Am I right? या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? It's right, X minus M आएगा. बट ऐसे कब तक चलेगा यार? This is not net exports. ये net exports नहीं है भाई. आप लोगों ने रट रखा होगा. This is not how it is. ये net exports नहीं है. This is just exports. आ रहे हैं, शांति रखो. अपनी रटी हुई नॉलेज पे ट्रस्ट ना करते हुए अभी तक. अच्छा ये बताओ, अभी तक जो लिखा है इसमें कुछ भी रटना पड़ रहा है? Whatever I have written so far, are you having to mug this up or is this natural? Naturally समझ आ रहा है? Logically समझ आ रहा है? कुछ रटना तो नहीं पड़ रहा? नहीं रटना पड़ रहा ना? बस यही एम है कि नेचुरली आपको याद हो जाए, लॉजिकली आपको याद हो जाए, आपको रटना ना पड़े, क्योंकि बहुत चीजें आपके पास रटने के लिए. ऑप्शनल में रटने में टाइम लगाना, अगर टाइम है तो.
अब एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, मैं सबको ऐड कर देता हूं. आई विल से C प्लस I प्लस G प्लस X. This is aggregate demand. Now this C is C total. C is total expenditure of household. Total expenditure of household. Right? So it includes domestic and foreign expenditure. I can say this is domestic and foreign expenditure both. Right? I is total expenditure. It includes domestic and foreign expenditure both. G is total expenditure, includes domestic and foreign expenditure both. I am counting for India only. I am counting for India only, what they are spending in India. मुझे उनकी बाहर की डिमांड तो कैलकुलेट नहीं करनी. If they have spent money abroad, if a household has 100 rupees, इसमें से they spend 50 rupees in India, या if they spend let's say 70 rupees in India and they spend 30 rupees in USA, तो इंडिया की एग्रीगेट डिमांड में मुझे क्या काउंट करना है? इन इंडियाज एग्रीगेट डिमांड व्हाट शुड आई काउंट? हाउसहोल्ड के पास 100 रुपीज है, 70 रुपीज इन इंडिया, 30 रुपीज इन यूएसए. व्हाट शुड आई काउंट इन इंडियाज? अगेन अब कोई कह रहा है कि फर्म स्पेंड मनी ऑन बाइंग ऑन गिविंग वेजेस. रीड डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड इज total money spent on goods and services, sir. On goods and services, not total money spent as wages. Aggregate demand is money spent on goods and services. ठीक है, चलो अब मुझे कितना काउंट करना चाहिए? I should count only 70. So if 100 is C total, from 100 I should subtract C foreign. अगर 100 है सी टोटल, मेरे को इसे 30 माइनस करके आई शुड ओनली काउंट 70. ये बात समझ आ रही है? आई नीड टू सब्ट्रैक्ट फॉरेन, आई नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस पार्ट, आई नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस पार्ट. ठीक है, चलो ये जो फर्म स्पेंडिंग मनी ऑन लेबर वाला डाउट है ना, एक्चुअली यू आर नॉट थिंकिंग, दैट इज व्हाई दिस डाउट इज कमिंग, बट आई क्लियर दिस अप. मुझे 1 मिनट दे दो, मुझे ये सॉल्व करने दो. आई कैलकुलेट दैट. ठीक है अथर्व, आई थिंक आपका डाउट है, आई कैलकुलेट दैट. मैं आपको दिखा दूंगा कि आप गलती कर रहे हो. अगर आपको एक लाइन में बताऊं, अगर आप फर्म की वेजेस इसमें काउंट कर लोगे तब डबल काउंटिंग होगी. फर्म ने मुझे वेजेस दी, आपने वो भी काउंट कर ली, फिर वही वेजेस मैंने स्पेंड करी गुड्स एंड सर्विसेज पे, आपने वो भी काउंट कर ली. फर्म मैकडोनल्ड्स गिव्स मी 100 रुपीज, आप कह रहे हो पहले 100 रुपीज काउंट करूं, फिर मैंने वो 100 रुपीज स्पेंड किए, फिर वो 100 भी काउंट करूं. आपने 200 काउंट कर लिए, थे 100 ही. यू अंडरस्टैंड? मैकडोनल्ड्स गेव मी 100 रुपीज, आई स्पेंट 100 रुपीज टू बाय दिस पेन. McDonald's gave me 100 rupees, I spent 100 rupees to buy this pen. You are saying count this 100 also and count this 100 also. Can you now see the double counting? Do you now see the double counting? Athar, specifically for you, because you are constantly writing in the chat. समझ आ रहा है? That is why I can't spend, count the expenditure on wages. ठीक है, I hope this is also clear that from C total I have to subtract C foreign to get to 70. From C total I have to subtract C foreign to get to 70. Only then I can get to the correct amount. I want to calculate only 70. है ना? ठीक है. So now what should I do? To calculate aggregate demand, I should say C total, which is C, minus C foreign, plus I minus I foreign. Same thing with investment, foreign वाला minus करना पड़ेगा. Same thing with G, G minus G foreign plus X. This is aggregate demand in India.
So I can say C plus I plus G plus X minus, and I'm taking the minus common, CF plus GF plus IF is equal to aggregate demand. यहां तक क्लियर है? अब समझ आया ये माइनस ये वाला कंपोनेंट कहां से आया? This is clear? I have taken all the negative terms in one side. मैंने नेगेटिव टर्म सारी वन साइड पे ले ली. नाउ लेट्स एक्सप्लोर दिस टर्म CF, what households are spending abroad. GF, what the government is spending abroad. IF, what the firms are spending abroad. इंडिया के लोग जो बाहर खर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो बाहर खर्च कर रही है, और इंडिया की फर्म्स जो बाहर खर्च कर रही है इंडिया से बाहर, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट इंडियाज इंपोर्ट्स. इंडिया में अगर कोई गुड आना है तो या तो गवर्नमेंट ने मंगाया होगा, या किसी कंपनी, इंडियन कंपनी ने मंगाया होगा, या किसी इंडियन पर्सन ने मंगाया होगा, किसी हाउसहोल्ड ने मंगाया होगा. सो दिस टर्म इज नथिंग बट इंडियन imports represented by M. From here I then finally come to aggregate demand, which is C plus I plus G plus X minus M. X minus M is exports minus imports. This is now the value of aggregate demand in the economy. समझ आया? अब प्लीज इसको रटना मत. Now please don't mug this up. And please don't mug this up now. कोई कह रहा है एक्स को डिफाइन करो, लिखा तो है. किसी अमेरिकन ने इंडिया में पैसे खर्च किए. इंडियाज एक्सपोर्ट्स अब्रॉड, है ना? दिस इज एग्रीगेट डिमांड. सो आई विल से टोटल स्पेंडिंग, total spending on goods and services in an economy. Total spending on goods and services in an economy will be represented as aggregate demand, C plus I plus G plus X minus M. X minus M is India's exports minus India's imports. This term can be mentioned as net exports, but ये याद ना भी रखो, even then it's okay. This should be clear to you. ठीक है? अब what did I study originally? I studied this, that demand curve will get replaced by aggregate demand. Demand curve will get replaced by aggregate demand. Supply curve will get replaced by aggregate supply. Now what we have done is we have derived the formula for aggregate demand. For aggregate demand, we have derived the formula and we say that aggregate demand in an economy is C, that is consumption expenditure by households, plus I, investment by firms, plus G, which is government expenditure, plus X, that is exports, India's exports abroad, minus M, यानी कि India's imports. ये हमने derive कर लिया है. We have derived this formula of aggregate demand and we were able to derive this on the basis of circular flow of income model. I hope this is clear. This is exactly what we have done. Now, I know that, अब इस ग्राफ को याद रखते हुए, I know that aggregate demand is made up of now these factors.
ये फैक्टर्स हैं एग्रीगेट डिमांड के, x एंड यहां पे -m लिखा है, ओके। एनीथिंग दैट चेंजेस दीज फैक्टर्स, कोई भी इस चीज को चेंज करेगा तो इट विल चेंज द एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड विल चेंज इफ एनी ऑफ दीज फैक्टर्स विल चेंज। If any of these factors will change, aggregate demand will change, it will have an impact on that graph. उस ग्राफ पे अपने आप इसका इंपैक्ट आ जाएगा। This graph will automatically have its own impact, है ना। अब यहां पर भी let's say I tell you that without change in price levels, कोई price levels में change नहीं हुआ, consumption by households has increased. Let me write a statement that in India, I tell you that in India, consumption by households has increased. Draw the macroeconomic graph and tell me what will happen. देखते हैं आप बना पाते हो या नहीं। सेम मैक्रोइकोनॉमिक्स का ग्राफ बनाओ एंड टेल मी व्हाट विल हैपन। Let's see. I know this is not that easy. I know this is not that easy, but let's try. बताओ बताओ क्या होगा। अरे डिमांड कर्व शिफ्ट आउटवर्ड तो मुझे पता था। You know, maybe I am getting old, or maybe, you know, I don't understand a little bit about your generation. I just saw a comment. I will not name the student, obviously. They said कि सर इस कॉन्सेप्ट से कौन से क्वेश्चन आएंगे। Every year there is a question on this, every year, and like you don't even have the patience to listen for 1 or 2 hours without asking this. This is a fairly disrespectful thing to say कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, इससे कौन से क्वेश्चन आएंगे। This is what you're trying to say, right? I mean, I don't understand यार कि आप लोग ऐसे like, you know, where you get these I don't know, what should I call it, your courage, or I don't know, tomfoolery भी कह सकते हैं, where you get it from, right? Because the fact is that it's great. Sometimes I feel this. I feel the fact that it's great that I've cleared the exam, right? So I at least don't have to justify anything to you, right? But there are people who haven't. वहां कैसे behave करते हो आप? Anyway, if there is increase in consumption by household, what happens? This is the demand curve. This is the supply curve. Now this is no longer demand, this is aggregate demand. जिसने भी ये क्वेश्चन लिखा था, आपको पता है आप कौन हो। इस साल का इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 2 पढ़ लेना, ठीक है। Anyway, aggregate demand will increase. Aggregate demand curve will shift outward. Let me call it AD1. This is AD original, aggregate supply original, and let me call it AD1. What has changed? Price level.
प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी हैज इंक्रीज, प्राइस हैज नॉट इंक्रीज्ड, एक गुड की बात नहीं कर रहे, प्राइस लेवल्स हैव इंक्रीज्ड, प्राइस लेवल्स हैव इंक्रीज्ड. And if this was the output, output has increased. Output original and output 1. Now let us draw conclusions from this and see what type of questions come from this type of graph. Increase in price levels of the economy is called inflation. Next topic that we are going to read. It will lead to inflation in the economy. 2. Output of the economy will increase. GDP of the economy has increased. Earlier economy was producing, let's say, 100 chairs. Now economy is producing 120 chairs. Will the economy hire more people or not? Will the economy hire more people or not? Yes, they will. And unemployment will decrease. So I can from this graph find out three things: effect on inflation, effect on unemployment, effect on GDP. Can you see these three things? I can find an impact on these three things: impact on price levels, impact of inflation, impact on unemployment, and impact on GDP. Inflation is nothing but महंगाई, महंगाई बढ़ जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी और जीडीपी बढ़ जाएगी अगर ऐसा होगा तो. Now I simply need to know what are the factors that can increase the consumption by household. Let's say one of the factors is government reducing income tax. Obviously, अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स कम करेगी तो लोग ज्यादा पैसे खर्च कर पाएंगे. पहले मेरा इनकम टैक्स लेट से 20% था, तो if my earning was 1 lakh rupees per month, my tax was 20,000 rupees. Now government says income tax on you is only 10%. Now I have 90,000 rupees. I will be able to spend more. Consumption by household will increase. So now, through this logic, now I can derive the fact that if government reduces income tax, what happens? Inflation goes up, unemployment goes down, GDP goes up. इस साल की बजट में याद आ रहा है ऐसा कुछ प्रोविजन? Do you remember some provision like this in this year's budget that Honorable Finance Minister said no income tax up till 12 lakh limit? 12 लाख की लिमिट तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं है. Why? Because the growth of the Indian economy was slowing. Government wanted to increase GDP. Government has economic objective of high growth. One of the tools in the hands of government is fiscal policy. फिस्कल पॉलिसी का एक प्रोविजन है गवर्नमेंट इनकम टैक्स को क्या करती है. सो गवर्नमेंट रिड्यूसेस इनकम टैक्स, कंजम्पशन बाय हाउसहोल्ड इंक्रीजेस, कंजम्पशन बाय हाउसहोल्ड इंक्रीजेस, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट्स आउटवर्ड. ऑल्दो इन्फ्लेशन हैपेंस, महंगाई बढ़ती है इससे, पर जीडीपी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है. नाउ कैन यू रिलेट ऑल द थिंग्स? इस साल की बजट का प्रोविजन भी याद आ गया होगा. व्हाई गवर्नमेंट हैज गिवन एन इनकम टैक्स रिबेट दिस ईयर? टू गिव अ बूस्ट टू जीडीपी ग्रोथ. कैन यू सी दिस अंडरस्टैंडिंग? अब यहां से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही है. सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, on the basis of aggregate demand shift, we can now decide whether inflation is being impacted in what manner, unemployment is being impacted in what manner, and GDP is getting impacted in what manner. ये चीजें अब हम figure out कर सकते हैं. Now, for this now,
I need to know, this is just the idea that aggregate demand has these four components. Aggregate demand has components of consumption, of investment, of government spending, and X minus M. Now to effectively use this graph, I need to know what are the things that lead to changes in them. कंजम्पशन किससे बढ़ती है, किससे कम होती है, इन्वेस्टमेंट किससे बढ़ती है, किससे कम होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग किससे बढ़ती है, किससे कम होती है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स किससे बढ़ते हैं, किससे कम होते हैं. अगर मुझे ये चीजें पता चल गई, I will be able to then relate and answer questions on कि यार जीडीपी को क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट को क्या होता है, एंड इन्फ्लेशन को क्या होता है. लेट्स से मैं अभी आपको बोलूं that government has decided or RBI has decided that there will be reduction in interest rate, बैंक्स का इंटरेस्ट रेट कम होगा. टेल मी द इंपैक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट. सोच के बताओ, टेल मी द इंपैक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में. अभी इन्फ्लेशन नहीं पढ़ रहे हैं. देखो, व्हाट इज द वे टू थिंक इज यार इंटरेस्ट रेट कम हो गया. व्हाट इज इंटरेस्ट रेट, पहले ये समझते हैं व्हाट इज इंटरेस्ट रेट. आते हैं इसमें. व्हाट इज इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट द प्राइस ऑफ मनी. मोस्ट पीपल डोंट नो दिस. इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ मनी. मान लो मैं आज बैंक से 100 रुपए बोरो करता हूं. इफ आई बोरो 100 rupees from the bank today, right, what will the bank take in return? मैंने बैंक से 100 rupees बोरो किए. बैंक कहेगा इन रिटर्न गिव मी ₹110 1 year later. अब इस 110 में 100 रुपीज तो बैंक के ही थे, वो तो बैंक का ही सामान मैं वापस कर रहा हूं. ये जो 10 रुपीज में एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, why am I paying this extra money? I am borrowing 100 rupees. I am paying back 1 year later 10 rupees extra. This 10 rupees extra is the price I am paying for borrowing money. जो अभी मैं सर्विस ले रहा हूं ऑफ बोरोइंग मनी, उसका प्राइस दे रहा हूं मैं कि मैंने आज 100 रुपए आपसे लिए. क्योंकि आप मुझे आज 100 रुपए दे रहे हो, मैं आपको 1 साल बाद 110 रुपए वापस करूंगा. जो 10 रुपए एक्स्ट्रा हैं वो है जो पैसा मैं आपको दे रहा हूं फॉर द फैसिलिटी ऑफ बोरोइंग, फॉर द प्रिविलेज दैट आई कैन गेट मनी फ्रॉम यू. इन द फ्यूचर आई विल रिटर्न 10 रुपीज एक्स्ट्रा टू यू, राइट? सो इंटरेस्ट रेट हियर इज 10%, वेरी एविडेंट. Interest rate is nothing but price of money. If RBI reduces the interest rate, what will that mean? Loans are cheaper. Households will spend more and firms will also invest more. Household will spend more, firms will invest more. That means that it is very evident that aggregate demand will increase. Aggregate demand will move out and it will increase. That means there will be increase in GDP and there will be fall in unemployment. But there will be a problem that there will be an increase in inflation. अभी इंडिया की इन्फ्लेशन किस पॉइंट पे है? राइट नाउ व्हाट इज द पॉइंट एट विच इंडियाज इन्फ्लेशन इज? राइट नाउ इट्स एट 1.4%. बहुत कम है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू विल सी द आरबीआई डूइंग इन इट्स नेक्स्ट
मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, अभी हुई नहीं है मीटिंग, मैं आपको अभी बता रहा हूं दिस इज व्हाट द आरबीआई विल डू। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, समझ आया? तो लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? See, now that we have access to this graph, है ना, we now don't have to use our intuitive thinking. अब मैं आपको एक ग्राफ बना दिया है, तो अब बहुत आसान है हमारे लिए एक लॉजिकल आंसर पे पहुंचना। नहीं तो क्या होता है कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस में, देखो अभी आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो आपका ब्रेन उस माइंडसेट में है कि आप इकोनॉमिकली सोच रहे हो। जब आप प्रीलिम्स देने जाते हो तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के जाते हो, पता चला पहला क्वेश्चन पॉलिटी का है, दूसरा क्वेश्चन साइंस एंड टेक का है, तीसरा क्वेश्चन इकोनॉमी का है। Sometimes it is likely that you might fail in getting to the right answer because of not being in the right mindset at that time. But if we are using these graphs, it will never be a problem because step by step process है। आप स्टेप्स फॉलो करते जाओ। आपने देखा है अच्छा इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, इससे इंपैक्ट किस पे पड़ता है? कंजम्पशन पे पड़ता है। कंजम्पशन से क्या चेंज होगा? एग्रीगेट डिमांड चेंज होगा। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? अच्छा ग्राफ ऐसे हो जाएगा, उससे ये तीन चीजें हो जाएंगी। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रोसेस टू सॉल्व एनी एमसीक्यू दैट यू गेट। ठीक है, चलो लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक एट दिस मोमेंट। We'll come back and then we'll understand what are the factors that influence consumption, investment, government spending and net exports. What are the factors that influence aggregate supply? And then we'll see some cases. We'll see some cases of what happens to inflation, unemployment and GDP. And we will see some real life examples जो हम आज या कल होते हुए देख रहे हैं। चलिए
चलिए, let us look at the determinants of the factors that are involved in aggregate demand. Aggregate demand में there is consumption, there is investment, there is government spending and exports. अब before I tell you, can you solve one question for me? Using this graph, although I will teach you this in detail, using this graph, what is the impact of US tariff on India? What is the impact of US tariff? You can just use this graph. Think what US tariff will impact. How will the graph move and what will happen? Impact of US tariffs on India. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. जैसे पहला स्टेप है कि मैं ये ग्राफ बनाऊं. I make this graph. This is the normal condition. I know that aggregate demand has consumption, investment, government spending, exports and imports. It is likely to reduce our exports. It will reduce our exports. Once our exports come down, what is going to happen? Aggregate demand will come down to this point. Once aggregate demand will come down, what will happen? Price levels will reduce, but output will also reduce. So the problem of tariffs is it is likely to reduce our GDP growth, likely to increase our unemployment, but yes, inflation will go down. अरे एग्रीगेट सप्लाई को कैसे अफेक्ट करेंगे यार टैरिफ्स? ये बताओ. ठीक है आदित्य यार, आंसर करो क्वेश्चन. समझ आ रहा है जो बोर्ड पे है? I don't want to get into the detail of this. It's okay. I don't want to fight with you. Asking a doubt would be, sir, why is price level coming down? ठीक है आदित्य? Asking, is this even relevant for the exam, is not a genuine doubt. I expect that you will understand that if there is anything that I am teaching you, it is relevant for the exam. समझ आ रहा है? Look at the board, see what has happened. GDP will come down, unemployment will go up, inflation will come down. Is this clear? Now can you estimate the impact of US tariffs on India? If American tariffs are put on India, why are we worried? We are worried because of this factor and this factor. India's GDP growth will suffer and India's unemployment can rise. See, there are, देखो अभी हम सिर्फ एक फैक्टर देख रहे हैं. हमने बाकी सबको स्टेबल मान लिया, सिर्फ फैक्टर देखा एक. कौन सा फैक्टर देखा हमने? इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ्स, है ना. सिर्फ ये वाला फैक्टर देखा, बाकी सबको हमने मान लिया कि सब ऐसे ही है. ऑफ कोर्स मल्टीपल फैक्टर्स आर प्लेइंग आउट एट वंस, मेनी थिंग्स आर हैपनिंग एट वन टाइम, बट दिस अलोन विल हैव दिस इम्पैक्ट. इज दिस क्लियर? This is why we have to study from these graphs. It becomes very easy. I don't have to see, the point is, अब कोई कह रहा है कि सर इन्फ्लेशन वाला एक्सप्लेन करो. Again I am telling you, I am requesting you, follow the graph. पहले प्राइस लेवल यहां था, अब प्राइस लेवल यहां है. See, it is not necessary that it will be evident to you how putting tariffs will lead to price levels coming down in India. But in India, price levels will come down. In US, things might get more expensive. That is different. हम US consider नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं. अब अगर आप intuitively सोचो तो आप कहोगे यार टैरिफ से इंडिया में प्राइस लेवल कैसे कम हो सकता है? बट होगा.
कैसे होगा? इंडिया इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ गुड्स. अब समझो इसका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग. This you might not be able to understand, and in MCQs you might not have time for this level of intuitive thinking. Therefore, we follow the graph. The graph always gives the right answer. Always. The graph cannot give a wrong answer. You can think wrong. Graph cannot give wrong answer because ये logical है ना यार. It's a logical construction. समझो, इंडिया के गुड्स पे टैरिफ लग गया. इंडिया produces these shirts, let's say. इंडिया प्रोड्यूस करता था पहले 50 ऐसी शर्ट्स. India used to produce 50 such shirts. 25 used to go to USA, 25 used to stay in India. Now US goods are being tariffed. तो इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा. तो अब इन 50 का क्या होगा? They will all be sold in Indian market. पहले इंडियन मार्केट में ऐसी 25 शर्ट्स थी, अब इंडियन मार्केट में ऐसी 50 शर्ट्स हैं. Supply has increased in the Indian market of these shirts. Will their price not go down? So graph never makes a mistake. Remember this. Graph कभी गलती नहीं करता. You can make a mistake in thinking. Anytime you get a question like this, impact of tariff on inflation. Inflation comes down. US places tariff on us. Inflation comes down in India. In India, inflation comes down. समझ आ रही है? आपको इंटुइटिवली नहीं सोचना है. आपने पढ़ा टैरिफ. आपने पढ़ा यार टैरिफ का इंपैक्ट कहाँ होता है? टैरिफ का इंपैक्ट होता है एग्रीगेट डिमांड पे. आपने कहा यार एग्रीगेट डिमांड पे क्यों इंपैक्ट होता है? क्योंकि एक्सपोर्ट्स कम होते हैं. आपने कहा ठीक है, मैं एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बनाऊंगी, इसको नीचे रखूंगी और मैं यहां पे देख लूंगी कि प्राइस लेवल्स को क्या हो रहा है. ठीक है, डोंट ट्राई टू गो फॉर लॉजिकल थिंकिंग. आपकी वहां पर गलती होने के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि आप ऐसा भी सोच सकते हो कि यार टैरिफ है इसीलिए ये कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, कोई और फैक्टर आपके दिमाग में आ जाए. ऑलवेज फॉलो द ग्राफ. ग्राफ आपको हमेशा करेक्ट आंसर देगा, हमेशा इट विल गिव यू द करेक्ट आंसर, है ना? ठीक है, अब लेट्स कंसिडर दिस कंजम्पशन. एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट हैं. पहला कंपोनेंट है कंजम्पशन. हाउ डज कंजम्पशन इंपैक्ट द इंडियन इकोनॉमी और व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंपैक्ट कंजम्पशन? पहला फैक्टर है इनकम टैक्स. गवर्नमेंट अगर इनकम टैक्स कम करती है तो लोगों के पास स्पेंड करने के लिए ज्यादा इनकम है, कंजम्पशन इंक्रीजेस. सेकंड, इंटरेस्ट रेट्स. इफ इंटरेस्ट रेट्स आर द प्राइस ऑफ मनी, ऑलवेज रिमेंबर दिस, इंटरेस्ट रेट्स आर प्राइस ऑफ मनी. If government reduces interest rates, spending increases. Right? Changes in wealth. If the wealth of people, हम जनरल बात कर रहे हैं, हम बड़ी इकोनॉमी के लेवल पे बात कर रहे हैं. If the wealth of people goes up, मान लो सबकी wealth बढ़ जाए. Wealth, you know the difference between income, wealth and consumption expenditure now. If your wealth increases, आपके stocks, आज आपने एक स्टॉक खरीदा हुआ है रिलायंस का, which is at let's say 1500 rupees, कल वो 15,000 रुपए का हो जाए, तो your wealth will increase. You will spend more or not? Of course. Consumer confidence. Let's say you have confidence that यार ये इकोनॉमी जो है ना, ये बहुत अच्छी बढ़िया बूमिंग इकोनॉमी है. I have a lot of confidence in the Indian economy. मेरी जॉब बिल्कुल नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा मुझे. I will have a good salary. I will have a good package regardless of what happens. I will have more tendency to spend. Consumer expectations of future price level. ये तो हमने microeconomics में भी देखा था. If I think that in the future prices are going to come down, आज पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए है, अगर मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ 90 रुपीज हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट मंथ स्पेंड करूंगा. अगर मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ 110 रुपीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा इन द फ्यूचर, तो मैं आज स्पेंड करूंगा. सो दिस इन्फ्लुएंसेस कंजम्पशन. एंड लेवल ऑफ इंडेटेडनेस. आज आप पे कोई लोन नहीं है, आप महीने के 10,000 रुपीज खर्च करते हो. कल आप पे मान लो 2 करोड़ रुपए का लोन है, तो आप 10,000 रुपीज खर्च कर पाओगे? नहीं, आप कम खर्च करोगे ना कि यार लेट मी सेव, मुझे लोन भी तो चुकाना है. So these are the factors that influence consumption. ऐसे ही similarly, let's look at factors that influence investment. पहला, interest rate. Investment is done by firms. Investment is done by firms for expansion.
firms want to expand, that is why they do investment. Firms ने interest rate, अब interest rate is nothing but price of money. If money is available cheaply, firms will spend more. If firms पे taxes अगर कम है, अगर business taxes कम है, firms पे taxes कम है, firms will spend more. Because tax कम है, उनके ज्यादा पैसे spend करने के लिए. If technology is increasing, कोई नया technological change आया, नया technology shift आया, firms will spend more. Firms will spend more to keep up. Firms को लगेगा कि अगर हमने इस टेक्नोलॉजी पे खर्चा नहीं किया तो मेरे कंपेटिटर्स कर लेंगे और वो मेरे से आगे निकल जाएंगे. So firms will spend in cases of technological shift or new technology coming. Business confidence and business expectations. Right? If firms have this confidence, companies have this confidence कि इंडिया एक booming economy है, हम अगर expansion करेंगे तो हमारे products बिक जाएंगे. Firm has this expectation that India is an economy where people are spending more. Firm को ऐसा लगता है कि लोग ज्यादा spend कर रहे हैं, firms will want to expand more. अगर firms को हमारी economy में confidence नहीं है, firms think that Indian economy is not that great, they will not want to invest in India. This is why earlier, अब ये ranking आती नहीं, earlier we used to focus a lot on ease of doing business ranking. Because if ease of doing business is good, firms have confidence that they will have proper expansion capabilities and opportunities in India. So they will spend more, they will invest more. When they will invest more, what will happen? Aggregate demand will go up. When aggregate demand will go up, GDP growth will increase. Okay. Level of national income. If BMW feels that they have to invest in one country, either Netherlands or Zimbabwe, where will they invest? BMW सोच रहे हैं हमें एक नई फैक्ट्री बनानी है अपनी कार्स बनाने के लिए, या तो जिम्बाब्वे में बनाएंगे या नेदरलैंड्स में. Of course they will want to make in Netherlands because they think that in Netherlands people will buy their goods. In Zimbabwe people might not buy their goods. And of course level of indebtedness of firms. Indebtedness of firms है ये. अगर फर्म के ऊपर बहुत सारे लोन है, BMW के ऊपर $20 billion का लोन है, BMW will not invest. But BMW के ऊपर कोई लोन नहीं है, they'll be willing to invest. ठीक है? So factors that influence investment. अब factors that influence government spending. This we'll look at when we study fiscal policy. Because fiscal policy is nothing but government spending. And factors that influence exports and imports, this we will study when we read international economics. ठीक है? अब हमने aggregate demand देखा था. Similarly, let's look at aggregate supply. Aggregate supply is total amount of goods and services that are produced in the economy by all industries. सारी industries economy में मिला के जो goods and services produce कर रही हैं at a given price level at a particular time. तो हम क्या करेंगे? जितने भी माइक्रोइकोनॉमिक सप्लाई कर्व्स हैं उन सबको सम अप करके एक सप्लाई कर्व बना देंगे. That is aggregate supply curve, exactly what we did here. Supply curve was there in microeconomics. We added all of it. We are looking at the economy level. We came to aggregate supply curve. Now this will become clear to you tomorrow. This is the short run aggregate supply curve. ये short run और long run मैं कल आपको clear करता हूँ. This short run and long run I will clear to you tomorrow. Right now just look at short run aggregate supply curve. ठीक है? अब what causes a change in aggregate supply? Aggregate demand के तो हमने factors देख लिए. Aggregate demand में there is consumption, there is investment, there is government spending, there is exports minus imports. हमने इसके factors consider कर लिए. Consumption कैसे increase होती है, decrease होती है. Investment कैसे increase होती है, decrease होती है. Government spending और exports imports हम आगे चल के देखेंगे. Now, what are the factors that cause a change in aggregate supply? Right. Again, first factor, change in wages.
wages are a factor of production. If wages will increase, what will happen to aggregate supply curve? What will happen to aggregate supply curve? पढ़ चुके हो ये आप पहले. This should not be inward shift, decrease in supply, change in cost of raw materials. अब ये तो आपको पता है that if there is cost of raw materials, if it goes up, that means supply will come down. ये तो आपको पता है. Let me give you now an example. अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे. दो केसेस हैं. केस 1, cost of oil goes up. Second case is cost of rubber goes up. ये दो केसेस हैं. You have to tell me in which case aggregate supply curve ध्यान से पढ़ना और आंसर देना. In which case aggregate supply curve will move more inward? Answer is correct. Most people have given the right answer. Correct answer is oil, and I'll tell you why. What is aggregate supply curve? Aggregate supply curve is sum of all supply curves. सारी इंडस्ट्री के सप्लाई कर्व हमने साथ में जोड़ दिए, एग्रीगेट सप्लाई कर्व बन गया. अब अगर किसी ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा विच इंपैक्ट्स ऑल इंडस्ट्रीज. एक केस है जब कोई ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ रहा है विच इंपैक्ट्स ऑल इंडस्ट्रीज, तो सप्लाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व काफी इनवर्ड मूव करेगा. अगर कोई ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ रहा है विच इंपैक्ट्स ओनली सम इंडस्ट्रीज, तब भी एग्रीगेट सप्लाई कर्व अंदर मूव करेगा, बट थोड़ा कम अंदर मूव करेगा. इफ आई लुक एट कॉस्ट ऑफ ऑयल, oil is something that all industries need because all industries need transportation. आज अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है, all industries will have their transportation become costly instantly. आज अगर प्राइस बढ़ता है तो आज ही सारी इंडस्ट्रीज की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, राइट. बट अगर रबर का प्राइस बढ़ता है तो कुछ इंडस्ट्रीज इंपैक्ट नहीं भी होंगी, राइट. So this impacts more industries, therefore there is more likely movement of aggregate supply curve. Is this clear? यहां पर ज्यादा कॉस्ट बढ़ रही है तो ज्यादा इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो रही हैं, so it will move more inward in first case. ठीक है. अब what are the other factors? Change in price of imports. ये क्यों होता है? मान लो we have a pharmaceutical industry in India. इंडिया में एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है. We import the pharmaceutical ingredients from China. हम चाइना से फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट करते हैं, फिर हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर हम दवाइयां एक्सपोर्ट करते हैं. अगर इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई, आज हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स 100 रुपए में, कल अगर वो 1000 रुपए के हो गए तो कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, एग्रीगेट सप्लाई विल रिड्यूस. अगेन
चेंज इन गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, ये तो हम पढ़ चुके हैं. दिस इम्पैक्ट्स द सप्लाई कर्व. Aggregate supply curve is nothing but the summary or the summation of all of these supply curves, right? और supply shock, जैसे कि कोई सडन इवेंट, जैसे कि वॉर, जैसे कि अनफेवरेबल वेदर, जैसे कि कोई पैंडेमिक आ जाए, तो एकदम से सप्लाई जो है वो कम हो जाती है. ठीक है. अब आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल एंड द क्लास. एंड एक आपको रिक्वेस्ट है, देखो यार, ये जो चीजें यहां लिखी हैं, कंजम्पशन वाली चीजें जो लिखी हैं, इन्वेस्टमेंट वाली चीजें जो लिखी हैं, और ये एग्रीगेट सप्लाई वाले जो फैक्टर्स लिखे हैं, ये आपको रटे हुए होने चाहिए. यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक हियर. ठीक है. जैसे मैंने आपको सेम कहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि डिटर्मिनेंट्स याद रखो, यहां भी प्लीज डिटर्मिनेंट्स याद रखो. ठीक है. डिटर्मिनेंट्स में गलती नहीं करनी है. ठीक है. डोंट हैव टू मेक द डिटर्मिनेंट्स, यू डोंट हैव टू मेक अ मिस्टेक हियर. दिस इज द शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम. अभी हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं. लॉन्ग रन क्या होता है वो हम कल पढ़ेंगे. वी विल रीड द लॉन्ग रन टुमारो. ठीक है. लॉन्ग रन में क्या होता है, व्हाट हैपेंस एक्सेट्रा, व्हाई इज इट डिफरेंट. Once we read the long run macroeconomic equilibrium, then we will understand national income accounting. हमने यहां पर we have tried to understand, हमने ये तो पढ़ लिया है circular flow of income model, this we have already understood. ठीक है. तो अब हम national income accounting कल पढ़ेंगे and we'll try to understand various things. Just one question before I go. Question is, you have 1 minute, draw this and tell me what happened in COVID now on the basis of this graph. क्या हुआ कोविड में ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ, टेल मी. सिंपल है. पहले तो आई विल ड्रॉ द नॉर्मल ग्राफ कि कोविड से पहले क्या चल रहा होगा भाई. कोविड से पहले ये होगी एग्रीगेट डिमांड, ये होगी एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है. फिर मैंने कहा यार कोविड आ गया. अब व्हाट इज कोविड? इन दिस केस कोविड लुक्स लाइक अ सप्लाई शॉक. एक मेजर डिसरप्टिव इवेंट था, एक सप्लाई शॉक था. तो मैं कहूंगा शायद सप्लाई शॉक है तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व शुड मूव. वेयर शुड इट मूव? कोविड की वजह से सप्लाई बढ़ी होगी या कम हुई होगी? कम हुई होगी. तो इट शुड मूव इनवर्ड. समथिंग लाइक दिस मस्ट हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ कोविड. अच्छा, अगर दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ कोविड, व्हाट हैज बीन द इंपैक्ट? प्राइस लेवल्स इन कोविड वेंट अप. बिल्कुल, कोविड में चीजें महंगी हो गई थी, है ना? बिल्कुल हो गई थी. जीडीपी ऑफ द कंट्री वेंट डाउन, ये तो हमने देखा ही है. ड्यूरिंग कोविड जीडीपी ऑफ कंट्री वेंट डाउन. हमारी जीडीपी ग्रोथ एकदम कम हो गई थी. जीडीपी ग्रोथ की हालत खराब हो गई थी, कॉन्ट्रैक्शन हो गई थी, फॉल इन जीडीपी हो गया था. अच्छा, व्हाट अदर थिंग दैट हैपेंड? आउटपुट कम हो रही थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट हैव गॉन अप. सो मेनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स इन कोविड और नॉट? So many people lost their jobs in COVID. You see this? You see the impact? Exact. अब आप जो आपने देखा है in real life, can you relate it now on this graph? Can you relate on this graph now? Exactly यही हुआ था या नहीं हुआ था कोविड में?
ठीक है, चलो. So that brings me to the end of today's class, right? That's all I have for you today. Tomorrow we'll come and we'll try and understand the remaining part. So we'll now understand national income accounting tomorrow. कल हम GDP calculation समझेंगे कि GDP calculation कैसे होती है, and we'll understand the long run macroeconomic equilibrium tomorrow. ठीक है? Thank you for your time. See you guys tomorrow. Bye bye.